Direct southeast to northwest cut on Miramar for our 11th match of the tournament of the series. Teams should find it fairly simple to access most of the map here, Blank. It's not really going to isolate too much away. Late positions over towards places like Cruza Valle, towards Tierra Bronca, also over to Valle de Mar for teams like 4 AM, and Los Higos as well, a little bit further south, but everywhere else really going to be very accessible now. Absolutely, I think there's going to be a fair few positions around the map which should be accessible for these teams. A very fair playing path here on Miramar towards El Pozo. DRS obviously out nice and early. An Eastern team most of the time. This has been throughout most of Pmgcs who've seen DRS take up this kind of approach as well. It's nice to see this continue for them. Buradam in their vicinity, just not able to get through onto a lot of these positions they'd like to take. Many teams around their areas shutting them down nice and early. Impala for Buradam. East side, Alpha 7 out a little bit later, potentially heading up towards La Cobreria and the Crater Fields. A south circle will bring them back down south. Alpha 7 had the wind knocked out of their sails just a little bit so far today. Only 2 more chances to prove that it's still there, that they were just tacking into the wind. Influence Kemin though, they've been keeping that pace up just a little bit further. 85 to 83, Alpha 7 to Influence Kemin respectively. But Inco stretching out ahead. 12 points ahead of DRS after DRS's chicken dinner. Inco still sit firmly atop, and they are the first team to break that 100-point barrier. Still doing some really good work for Inco. A little bit blessed throughout today in terms of circles. They've translated that into points though, that's the main thing. Doesn't necessarily always mean you get points even if you get the circle. Does not work that way. We saw that from T2K up in Severny anyway. They dropped in that spot, weren't able to get the points available to them. Down to just Jane in the end, taking himself out. Again, 3rd place, not bad for them. 81 points in 7th. A real opportunity to move up towards that upper echelons. 4th place, definitely accessible. Like to see a 4 AM game here, though. Still putting up those numbers, but again, a little bit more needed. 4 AMs at 4, they look really good, but losing players early at the moment, not ideal for them. Nova, I think this could be another big game for them, John, honestly, here on Miramar. There has been some oopsie daisies through the last couple for them. And I think Nova can definitely turn this one into a win. Nova down in, I say down, they are in 5th right now. Maybe should say up in 5th. It's certainly very much still in that conversation, which is where they wanted to be. We questioned their presence and their power in this lobby, in this final, from yesterday's performance, but we knew that they've always had it in them. 30 knocks for Matic over in the last chance qualifier. It's just such a shame that HVVP didn't make it. A very powerful team, but when the chips were down, when the cards were being counted, it just didn't go their way. And that's sometimes just how it goes here. The Pmgc found the top 16 teams in the world and has brought them all together here. And at the moment, Inco sits atop that pile, the Brazilian squad. It's a cruel finish as Pmgc. Like I said, John, things don't necessarily always go your way. You have to work with what you're given. Looking at 4 AM on our screen at the moment. Currently down towards the eastern side of Minas del Valle. Just passing up past Los Higos and a couple of players underneath Empire Esports in Los Leones. Potential for them to get a good game here considering the circle down towards that southwest. Fireflux also maybe looking for a big game here. You'd hope anyway. 65 points right now for Fireflux. 11th place on the tables. It is very volatile still on these tables, and in an 18 game set, it can all change at the drop of a hat. So you do need to keep your wits about you. Seize any opportunity that comes your way, should it be presented. Wolves moving quite early on this one, able to get central towards Chumacera. Valuable position
You're talking about it with Fireflux holding that area as well. They will be getting some neighbors fairly soon. For Angry Men, they left south from Los Leones. They are coming in towards Minas de Valle now, but the hills to the south of Chumacera could prove to have value, and the value that they are looking for on 4 Angry Men to try and catch up to Nova. Now a 9-point difference between them and 4 Angry Men. It's a good spot to play actually for 4 AM. Really nice high ground to play around with. Getting in this spot early on is always the name of the game. Not necessarily a position that you can head in towards later on. This is one of the positions that you bank on, so I like this play from 4 AM, splitting Svan, Kuziao, Ching Chen and Co. on a 2-2 split, allowing them to regroup together wherever the circle goes, but always on high ground, and giving support to one another from afar. It's a very smart play. Let's see if this one works out though. That's always the question. Inco barreling their way in from that northeast side. Getting caught up between a few teams though in the process. Still quite a little bit of space around them. Miramar obviously being so large, there's a lot of rotational paths there. To their east side, there's T2K. To their west, they have to deal with the Wolves, who made this rotation a little bit earlier than they did. Vampire potentially coming across T2K as they head west from Los Leones. Ravenclaw very, very close by, and it looks like they might be looking for this engagement. 2 players moving forwards. 2 stops wanting to swing out wide. His first entry for the squad so far in this tournament, looking to elevate them from the 39-point bottom table performance that we've had from them so far. T2K, 2 players are there. The Vampire aren't going to push for them either way. Not going to take too much damage from it either. They will maintain for the time being. Keep the course on the heading. T2K, 81 points in 7th place. I feel like this is a team we haven't really talked about too much, but there is a lot of power there behind them. I think T2K have been steady away for the majority of this tournament. We haven't been able to talk about them too much, John, but honestly, regardless of that fact, they're still making stuff happen. 81 points is one hell of a result. It just hasn't been any of those pop-offs. It's mostly about just getting towards that end game, picking up those points where they can, and then going from there. Influence Kevin, another team on that same kind of hype, trucking away on those points. Alpha 7 were able to overtake them just a little bit up towards 85 now, head them by 2. IHC, shots over towards Alter Ego. Alter Ego skirting around on the headland there. Will be able to get to safety for the time being. 4 of their players still alive. And playing on the southwest side near Valle de Mar, as Alpha 7 going to be moving in from the north edge. Everyone really banking on a lot of spots around the map at the moment. Trying to figure out what kind of spots will be ideal here, or trying to take at least whatever is suitable. Monte Nuevo in this one though, very hardship towards the northwest. 4 AM really put out by this one, as our DRS down towards that south side. Influence Kemin got a long, long way to go. Can't even see them on the screen for you guys, but they're all the way over towards Puerto Paraíso at the moment. Inco, again, shifted to 5th gear. We'll get a move on up towards Monte Nuevo's side. 4 AM equally. Just trying to get down off that mountain as fast as possible and back on the road. You can see them zipping, flying over the top of these ridges. A lot of teams making rapid movements now. This is a very hard shift, Blank. This zone 3 will put the cat amongst the proverbial pigeons as Nova moving in from that east edge. Might come across Inco if they move any further south, but everybody on that east side will be up to bat, I'm sure, in the coming set of rotations.
For Angry Men rolling on up. Actually, in the meantime, over towards Nenebete. Goes 1-for-1 on the trade. Becker moves through. Nenebete flushed away. 4 Angry Men moving as a unit. Squash able to do some damage. And now up the stairs they go. First down, but again, they traded off. And 4 Angry Men are winning this out by the sheer fact that they're sticking together. Becker, low HP close by, will need to get a heal off if he wants a chance in this engagement. 2 versus 1 right now. Has got a backup now coming through in the form of Vitali. But they are splitting this fight nicely. And in comes order from Nova as well to slow the players on the inside. Vitali down and out, and Inko full early 16th place, 0 points. The door is open for teams to try and catch up now. 4AM though, suffering to similar antics, losing players early. But Inko going out is not great news for them whatsoever. Gives a chance for DRS, S2G, A7 to potentially catch up. Pretty much everyone all the way down to 7th place in T2K, 81 points. Reachable for players in that bracket, should they have the circles align. Inko, 110 right now, which sits points ahead of T2K. Another one sent on over. Not going to land any damage, but certainly going to as a prospect. Shots actually coming through from T2K. 4M at least do get a resupply on the guys from Inko there. Should give them enough heads, enough supply to restabilize. I think that was nations going their way. Yes, it's decent news for them. Circle is up a little bit more. S2G dead set in the middle. Might be looking for another big game. Obviously, they dominated on our earlier Miramar of the day. Looking to make this one number 2. Buradam from the south side. Max had them as a dark horse pick. We really respected their prowess in the games that we've seen from them so far. They deserve to qualify here. But they have fallen just short of that mark, that barrier that they set for themselves to try and jump on up. Hopefully they can resurge. There's still a couple more matches for them to be able to do so, to climb up those tables all the further. And this time they will move into the south of S2G, who are looking to close that gap themselves against Inko. I think if you look at Buradam, it really does feel like the wings were torn off and they were falling from up on high during this Pmgc. Hope for something a little bit more from them. Didn't see it. And again, still don't see it at the end of the day. Kengza was so confident coming into this Pmgc2. I feel like they weren't able to really find that same type of momentum that they were showing us over in that group stage. Again, central position now though for them. First time in a long, long while that we've seen Buradam be able to pick up a position like this and work with it. Alter Ego take a knock. Hopefully they can get back towards that one, get that res. Going to be tricky though. That is fairly out and open. A vehicle is really the only cover, the vehicle that was dropped out from. The smoke blooms under pressure from Alpha 7. Carrillo's low, so will be forced to heal off there. Can't really afford to go for this peak, but Alter Ego seemingly really want to invest the resources to get this one back. IHC don't have other ideas. They are going to control the ground around them. IHC, really big lineup at the moment with Alex further back, Demo down towards the southwest. Still have to keep eyes over towards Fireflux and DRS, but DRS look like they are moving up towards Fireflux's position. Rules gets dangerously close. He's on the ridge side. You look at Wolves though, they've got a nice little split for themselves towards the centre of the map. With that ditch right in the middle that Buradam currently hold. They're not going to be taking too many fights with anyone anytime soon, but it will give them a lot of time to just live towards the end of the match here. Fireflux now needing to hold off against this push, but they split up a little bit. Now facing off against 4, Killer will waste no time in opening up the bidding. Solke immediately dealt with, and look at that, Solus just sends away. Not really too much else to do in that scenario.
They know that they're going to have to move further forwards north for Fireflux, so why not get ahead of it? You've already lost your teammate, and now DRS are hot on your heels. You need to make the most of every second you have. Yeah, DRS are just an encroaching team. Once you give them any kind of space available to them, like vines, they're just going to creep on forward, take them all that space towards themselves and constrict you. I think for any one team in their vicinity, just has to leave, get out of dodge. My name P, surprisingly, down towards that south side of DRS. Not regroup with the rest of his team for Budoram. It will be a long run to get towards them, and he is heading dangerously close to DRS in this moment. The circle at stage 4 will be hitting very hard. Nova eastern side. Frozen at the back on the east side. Influence Kemin looking to shunt in just a little bit further south of that. They are really struggling. 3 players are alive. Federal knocked almost down, but not out of it. Koyovski's handling business in the meantime. T2K not ready for it, it seems, but Koyovski's finally dispatched. And in a difficult position for Influence Kemin to get the res, but they're going to try nonetheless. Both players up and into the buggy, swinging down low. Federal on the back is the moving turret. Not going to be able to get the knock on the approach. Have weapons to the UMP, and not enough bullets are available there. Jane, so waiting for the players to get a little bit closer. Now they going to try and trade it off. Rig pushing on in with the blue zone moving. They have to go for the fight. Rig to the tree, finds one, looks for a second. T2K holding out around the tree. Federal, oh, just able to sneak it through, but the blue zone's there. It's going to be cruel. It is not going to be easy for them. And now Nova have to fight off against 4 angry men. They've been close by for a while now, and Jimmy is able to get an opening knock, but Chingchen able to look for more as a trade happens across the way. Order down, backs off the hill. Jimmy and Paraboy looking to try and re-envelop Order into the fold. Smoke's going out, providing Ching Chen with a little bit of base of operations here. Moves down, tries to spot the player behind the wall, gives it the pre-spray there, but won't find anything much more. Order, I think, has now regrouped. Players from Nova up front, providing that backstop. Svan, the back there, the veteran from 4 AM, looking to put more damage through towards Nova's side. Oh, Jimmy catches an ankle. Not going to do too much, but certainly opens up the possibilities here. Frozen is going to break out wide, but Jimmy gets a lovely angle through the window, and it's another one to go down for 4 angry men to leave them out. 14th place, 5 eliminations. Jimmy is resable, but they'll have to crawl forwards. The blue zone not going to be able to heal out on that one, and you can see Paraboy lobs him over the shoulder. The lift to the circle keeps him alive. Wonderful stuff there from Nova. Really, really good understanding of the map and the terrain. It's the only way that happened so cleanly, and they knew they had to finish out that fight quick, considering how close they are to the circle starting to envelop. Yuhai heard this engagement, made the operative decision to head down this way and maybe hold out a team that's just come out from the back of a pretty hefty engagement themselves in Nova. With the time that they've been given, Nova are going to be able to regroup quite effectively. Yanti, oh no, finds Solus lying in wait for whatever reason for Fireflux. And DRS are down now, so S2G, the only team that can look to really push realistically in this game. Nova on the east, sure, they might be able to make it. Alpha 7 actually as well with a shot over on that western side. But to be honest, S2G's position is so powerful. Look at the high ground that they have. It's just so difficult to deal with for any team nearby. S2G, said it before, very strong here on Miramar. Great at finding these positions around the map. Fireflux, lose one more in the process. There's another going down. Some great long shots there. Over towards on board of Alter Ego. Alter Ego will have to push a little bit closer to the next zone as well. Fireflux fall on the south side. Alpha 7 to the north of Alter Ego. And where do Alter Ego go now? Because S2G are going to spot everything they do as soon as they want to move. Alpha 7 there to catch them if they move north. IHC crunching them in on that south side. It is brutal for them on the southwest. Nova squeak in on the northeast side in the meantime. Good stuff from them. Difficult run for Nova, but they've found themselves a position to play from. Oh, great news. Snipes already moving further towards the center. Wolves
locked in combat right now. Vampire trading off, remember, it does go down. Ravenclaw knocked, but safe for now. For the time being, Pick Feet close by, spotted over the hillside. Fluke tries to go for the spray, but he hits the deck and fades the shots there. Vampire playing together, playing solid. Beautiful though, finds a little bit of an opening, tags it on, and finds a second knock onto Vampire. Fluke tries to control the ridgeline, but it's just not going their way. Two Stocks not going to be able to do anything as there's a second player from Wolves to move through. And what a push coming in. Beautiful, beautiful over that ridge. 5 eliminations for the Wolves, and Vampire cannot stand up to the test. Clean engagement from Wolves there. Vampire looked like they were doing so much better already with 2 stops in the fold. They just get crumbled by Wolves on 3 different angles. Wolves just play through the pressure. 7 eliminations already on this game. Looking to end their Miramar strongly. S2G still playing out the game slowly. Now looking over towards IHC. Incredible spot for them. Very difficult to play against this position from S2G. The circle moves further down towards the southwest. It's almost a guaranteed S2G win. Will be difficult to wrest it from their control. But how far can they go? They sit 15 points behind lobby leaders Inco. A chicken dinner would see them there, and the eliminations would see them even further. IHC trying to roll over the top now into Alpha 7 sightlines. Mafioso and Carrillo lighten teams up left and right. Will have the forward positioning Carrillo to be able to regroup towards as well as they control these teams on the south. Alter Ego, this is the difficult push that we were talking about before. Fnatic lobbing that nade up towards Alex to try and isolate an angle, but Alex sends one back and it's good for 2. And not only that, it's good for the 9th place finish of Alter Ego. Circle centers up, still doesn't matter. Even the barest ridge side of this spot from S2G still in. It will give them major control over the majority of this match. Stalwart looking to pump some more numbers. Down in 15th place, really not the PMGC they were looking for, not the PMGC we expected from them either. Nova though, taking massive amounts of damage. This is always going to be a difficult push, and they want to go for something drastic. But they are here now, which is really quite great news. If Geek Fam trying to move away from them, but really can't do that. Sky Only somehow manages to lead out into the field, but actually gets backed off by Revo from Alpha 7 from the north side. A little bit maybe overzealous on the rotation. Top from Godlike Stalwart, spots Sky Only rocking up to his shack, and actually he's not going to waste any time in just going straight out into the field. Sky Only under pressure from all angles, but Top, you can't afford to be out in the open like that. Not when everybody's looking your way. Sky Only has a nade in hand, but there's one coming through. Oh wait, no, hang on a minute. That was from himself. Okay, I thought that was from Top, but no, it does go up in flames, and it is actually Pika to get the point. Stalwart looking very dominant on this northern side. To push even further down. Buradam, great chance in this game. Really given an opportunity here, John, and done next to nothing with it. Mine MP being away from the rest of the team. Now Kengzo going down to some great shots coming through from S2G, now starting to really leverage this position of theirs. Nature of Godlike Stalwart towards Alpha 7, who have themselves been quite the terror on this northwestern side. Moving over the ridgelines, Top wants to go for a spray, but Pika has already fallen and doesn't really have the cover on that flank that he needs to be the force on this 2-2 split. Mythic over the side of that ridgeline around the tree. A lovely nade to the back. Over onto Mafioso for Top, and he's still holding strong for now. Doesn't really have so much mobility with the sightlines that S2G hold, but Alpha 7 are going to think twice now about pushing around this sideline. A nade over the top doesn't really go far enough, and Mafioso can get rezzed here. Mythic close, crawling in towards Top on the UMP.
and hits the deck in the smoke. Wants to go for the heal now. Carrillo has the nade in hand and wants to pull the pin. Smoke actually just being redeployed in front of Mythic, and they can keep this ridgeline. Molotov in hand. Top launches it towards the back lines, but Mythic is close by. Top fades it away. Ooh, he's playing it super sneaky. I think he's been spotted. Mythic tagged. Stressful scenario now for Alpha 7. Mythic in a real tough spot. Stalwart looking to just keep them on that side. S2G have to break away. Perfect opportunity for them now. The Wolves have one of the few positions that can really slow them down, but the zone will push them off it soon enough. The question is, what can they do before that happens? Can they get an opening towards S2G? Alpha 7 gets spotted out by Razy. Mythic taken super low and starts his movements forwards in the buggy and stays alive for the time being. Just that sliver of HP keeps him in and actually allows Alpha 7 to have 3 players moving central. They've already given up on Mafioso. Wolves have to move from that position, and they will move up north and swing out to sweep against Geek Fam as Memory swings out wide on the ridgeline, and Pit leapfrogs over the top of him to put more damage through. 1-2, 1-2, and through. Memory pulls them back to mortality. Great stuff there. The memento is all Geek Fam were at the end of the day. They sift past them. Looking over towards Nova, still in the match in stage 7. Only 5 teams remaining, so again, a decent result for them. Alpha 7 push this one a little bit further. S2G do not want to allow another one of these games to slip, considering they had such a good start. The direction of the shack for Jimmy, I mean, I said it before, is going to allow him to survive for a long time. Geek Fam did not push up into it, and now Wolves are fairly decimated. They've managed to achieve 10 eliminations though in the meantime, so a phenomenal result for them towards the top. Now S2G looking to just continue this pressure as they push in from the south. Alpha 7 have got some solid spots to try and defend from though, as Silas moves up close and personal to Revo and Mythic. Has got a nade in hand. Will know that those vehicles are there. Should be able to place it nicely. Mythic will receive the brunt of the damage, but can start to heal that up very quickly. The rest of S2G will have sightlines, and they'll know that there's a player by this rock now. Bandages only, and only the one for Mythic. Those stims not going to last too long, and he's no helmet either. Yo! Throwing those bandages over from Revo, actually going for a second deployment as well. Such a crucial position, and Carrillo steps up for Alpha 7 to move Silas back. Slow S2G, but they've already taken down one player from Wolves, only Pmgc remaining. Looked like a good grenade over towards Alpha 7, but a bit too short here from Stalwart. S2G taking a lot of casualties at the moment, a lot of damage going their way. Still have a really strong spot on the top of the high ground, and I think maybe Silas' position was a bit overzealous there. Gets forward, and maybe he's able to be that player that is the cobra in the grass. But Hamzy G's gonna go for it, and this is a mistake. This is the biggest mistake we've seen all day. Gets cut down in the process. Alpha 7 though, 3 eliminations this late in the game. It wouldn't be a big chicken dinner, but it would be a great way to give them confidence to come back in and keep this momentum going. S2G likely now down to 2 players on this south side. No team at full force. Pmgc playing in the shack. I think he might just be able to stay in this next circle. Will do so. Has to hop out the window if he doesn't want to take blue. Oh no, wait, he's already on the outside. I thought he was on the inside, but no. We'll be able to move forwards on foot. Godlike Stalwart, 3 players on the northern edge, and trying to challenge out Alpha 7. Razy and Kelsey now have to really work hand in hand. If S2G want even a chance in hell getting up towards that top 2. Stalwart tossing the smokes out, creating the train. Good shots from Alpha 7 though, and Stalwart's picked to pieces. Mythic pulling them apart there on the push. Top already down, action low. Scry, the only one really healthy at this stage for Godlike Stalwart. Ooh, action so close to going down there. Managed to get the first aid off just in time before it tickles too much. Mythic close.
Love's crawling around in these smokes. Nades over the back and a Molotov to slow down that ridgeline. Will pop the nade further back and Revo suppressed. Carrillo up the top, going to be pivotal in this engagement. Mythic needs to land a shot as well. It's traded 1-for-1. Scry with the blue zone coming through, goes for the flush instead, and now Carrillo can look to stand up, spots Scry, and takes down Godlike Stalwart. But that is an excellent go time for S2G themselves. Klausy and Razy, the last two players. With Revo at the back and S2G look at a step up tall. Carrillo over the ridgeline. And but with an assist coming in from Godlike Stalwart on the north side, they pull it back together, and with that, they strike out for the top of the table. A couple of mistakes at the end there. You can see the relief as well. They thought it might have cost them, but Razy and Klausy bring it through at the end. Some real clutch movers there. Necessary to keep them in it. I think Pmgc going for that res though had to be the boldest move we've seen all day. Just rolling down the UAS. Sometimes you just got to make that sort of play, you know. Sometimes it just happens like that. Talking to Alpha 7 about that finish as well. Both of those teams will be very happy with how that one played out. Obviously Alpha 7 needed that game to pump their numbers back up again just a little bit. Your S2G, who just missed out on that chicken dinner on Miramar last time around, but this time they're able to pull it all the way through. Really, really good stuff from S2G. Played that map out very nicely, which is a real boon for them tomorrow. If they're going to dominate on that map 2 times in a row, and they can continue to do that tomorrow too, wonderful stuff. That's going to give them a real boon coming in tomorrow, knowing that, you know, by the end of the day, if they're still lacking some points, if they want to get towards that #1 spot, take home the grand title for Turkey, you know, there's always Miramar still available and ready to give them those points that they need. How cool would that be to have a defending champion team at next year's PMGC? But they've still got a whole match and an extra day to play through if they want to maintain that spot at the top. They were 15 points behind Inco at the start of this game. I think they had 8 or 9 eliminations there on top of the chicken dinner, so they will have cleared that hurdle. It is now definitely within their wheelhouse to keep this one turning. Absolutely. S2G has looked like a good powerhouse during this tournament so far. These past 2 days, it's been nice to see. You know, they've been consistent. They have that firepower behind them. You love to see it. It's the kind of thing that is going to keep this team running into tomorrow, and I don't think they're going to run out of gas tomorrow either. No, seemingly they've been winding up, and they have been ramping up over the course of the matches that we've seen from them, and it's a brilliant way to be able to operate in this tournament. However, it is, I would say, always easier to have a goal than it is to maintain a lead. So in that respect, maybe they could falter, and maybe that could give Inco the boost, the push that they need. It could have been so easy for S2G if they hadn't sent Silas out that far. I think with the high ground that they held, that game was practically impossible to lose with the 4-man on the top side. Silas is kind of playing it just a little bit too cheeky, in my opinion, taking up that position. It was not DRS, it was STE जो के टॉप फोर में अपनी जगह बनाई थी, 3rd स्पॉट पाई थी टीम. DRS इस मैच में अर्ली एग्जिट लेके गई थी. अब मुझे याद आया कि STE was that team. साउथ एशियन टीम्स में कंफ्यूज समटाइम्स बंदा हो ही जाता है. लेकिन चलें स्टैंड्स की तरफ, सॉरी व्यूअर्स की तरफ चलते हैं. हमारे जो कि मौजूद हैं अरीना की तरफ चलते हैं. अरीना में हमारे हमारी जो भी पब्लिक है जो कि
Remember that time जब डू यू हैव यू नोटिस समथिंग कि हम इंडिया को एक हब समझते थे ई स्पोर्ट्स का, और एक अच्छी चीज़ थी। मुझे लगता था कि जब पबजी मोबाइल होती थी इंडिया के अंदर तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। क्यों? क्योंकि जैसे अब इसी साल, इस पिछले साल 2022 में PMRC को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो हम आई थिंक सो बैक स्टेज भी ये बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में ये गेम चल रही होती या प्लेयर्स खेल पाते, तो PMRC जब होता रीजनल चैंपियनशिप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो कितना बूस्ट मिलता हमारे ई स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को, बहुत बड़ा बूस्ट, कितना बूस्ट मिलता हमारे ई स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को, और एक राइवलरी एक बनती जब, तो क्या मज़ा आता यार उसको कास्ट करने का, उसको देखने का। और अगर ये किसी कंट्री में लैन हो जाता तो उफ क्या ही बात होती। लेकिन खैर हम यही बात कर रहे थे। मैं बेस्ट पार्ट बताता हूँ। यस यस, द बेस्ट पार्ट इज कि जब 4 एनालिस्ट इंडिया की साइड से और 4 एनालिस्ट पाकिस्तान की साइड से बैठे होते एक ही स्टेज के ऊपर, एक ही डेस्क के ऊपर, ओह माय गॉड, और फिर वहां पर टकरा चल रहा होता कि कौन बेहतर खेल रहा है। ये जो चीज होती, ये जो चीज पैदा करती है, ऑब्वियसली वो इमेजिन करके गूज़बम्स आ जाते हैं। लेकिन चलें फिलहाल बात करते हैं इस वक्त ऑन स्क्रीन जो हमारे चल रहा है, दैट इज ग्लोबल चैंपियनशिप फॉर नुसरात। और बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हम देख रहे हैं अभी के लिए, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मैचेस हम देख रहे हैं। एंड जो फ्लो है, जो मैं कहना चाहूँगा, डोमिनेशन है, जो कंसिस्टेंसी है, जो कह लें कि कमबैक्स हैं, वो सभी बहुत बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं, काबिल दीद हैं। और अभी तो आदि लास्ट मैच बाकी है आज के दिन का, अभी एक मैच बाकी है। और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है ई स्पोर्ट्स में, ये चीज़ अच्छी काफ़ी पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स में, कि आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे मैं आधा मैच देख के चला जाता हूँ। नहीं, आप बैठेंगे, आप लास्ट मोमेंट तक बैठेंगे, जब तक के रिजल्ट्स नहीं आ जाते आप नहीं जा रहे उठ के। ये चीज़ बहुत 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 मज़ेदार है, ये बहुत डिफरेंट कर देती है इस गेम को बाकी सबसे। लेकिन चलें फिलहाल हाईलाइट्स की तरफ हम जाएंगे, जहाँ पर ब्रू के माई नेम बी की तरफ से किल्स कंफर्म किए गए कुछ शानदार तरीके से। वहाँ पर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को भी हमने देखा, लेकिन ब्यूटीफुल और मेमोरी मिलकर जो जिस तरह से वैम्पायर के प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हैं, ये काफ़ी शानदार था। उसके बाद हाइट्स की तरफ से कुछ ये वो ग्रेनेड था, एक ग्रेनेड एलेक्स का, 2 kills कंफर्म। एंड वोल्व्स थोड़ा सा कह लें कि निडर होकर खेले ज़रूर हैं लास्ट मैच में, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा इस सीज़न को नहीं दिया रही। बिल्कुल आदन, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है, क्योंकि जितने उनके किल्स थे उस हिसाब से बनता था उनका चिकन डिनर करना। लेकिन वही बात है कि आपने चिकन डिनर अपनी वजह से ही गंवाया है। अगर आप वुल्व्स को देखें, हाईएस्ट किल्स थे उनके इस पिछले मैच में 11। टीम S2G जिन्होंने चिकन डिनर किया 24 पॉइंट्स के साथ, उनके 9 किल्स थे। अल्फा 7 के 7 थे, 10 किल्स तक भी कोई नहीं आ पाया। वहाँ पर वुल्व्स ई स्पोर्ट्स जो कि सेकंड पेज पर काफ़ी नीचे मौजूद थी, 11 किल्स ऑलरेडी वो करके बैठी हुई थी। और जब इन्होंने 11 किल्स अपने कंप्लीट किए थे तब ऑलमोस्ट 5 टीम्स सर्वाइव कर रही थी। बिल्कुल, लेकिन बात करेंगे मैच रैंकिंग्स, जहाँ पर के लिए ऑन टॉप मौजूद है S2G 24 पॉइंट्स, अल्फा 7 के पास 19 पॉइंट्स मौजूद इस मैच में, वुल्व्स विद 19 पॉइंट्स, गॉडलिक ST के पास 14 पॉइंट्स मौजूद रहेंगे, टीम नोवा विद 10 पॉइंट्स, IHC विद 8 पॉइंट्स, वैम्पायर स्पोर्ट्स विद 6 पॉइंट्स, 4 एंग्री मैन विद 4, इन्फ्लुएंस कमन विद 4, टीम गीक फैम विद 3। गीक फैम एक और बुरा मैच आती, एक और बुरा मैच। दुख हो रहा है लादेन मुझे ऑनेस्टली फिनाले से पहले
BRU से, गीक फैम से मोस्ट फेवरेट, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी. यस, दे वर द मोस्ट फेवरेट. ब्रू तो मुझे 100% था कि यार ब्रू तो परफॉर्म करेगी ही करेगी. थाईलैंड से आया हुआ ये स्क्वाड है, क्योंकि इनकी एवरेज इतनी बेहतरीन थी. मेरे ख्याल से सभी ग्रुप्स में से जब मैंने टॉप टीम्स की एवरेज देखी पर 24 मैचेस, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इन्हीं की निकली थी. सो आई बिलीव कि वो परफॉर्म जरूर करेंगे. S2G is on the first spot. Yes, they are on the first spot. 119 पॉइंट्स के साथ. लीड के साथ हैं. They are on the first spot with the lead, और सेकंड स्पॉट पे इनको गेमिंग जा चुकी है. और इसी के साथ साथ थर्ड स्पॉट पे हमने देखा कि थर्ड स्पॉट पे हमारे सामने इस वक्त के लिए ओके, सो लेट्स गेट बैक. आई थिंक प्रोबेबली ड्यू टू सम टेक्निकल स्टफ हमने SOS देखा ज़रूर है. SOS का मतलब है कि जस्ट अपने चेहरे ही दुनिया खत्म होने वाली, दुनिया खत्म होने वाली जी, दुनिया खत्म होने वाली. एंड आखिरी वक्त जो आ चुका है. एंड वैसे भी मैंने अभी रिसेंटली भी सुना है कि आखिरी वक्त काफ़ी करीब आ चुका है. और इट्स बिकॉज लास्ट मैच जो चल रहा है, 5 मैच जो हो चुके हैं, और जब लास्ट मैच होता है तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद शो खत्म हो जाता है. खैर, खवातीन रात हम पॉइंट्स टेबल से वो अपने सामने देख रहे थे, जिसमें हमें दिखाया गया कि ऑन टॉप फर्स्ट स्पॉट पर S2G मौजूद आती. बिल्कुल आदिन, और मैं वाकई हैरान हूँ. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस मैच के चिकन डिनर के बाद वो पहले पायदान पर डायरेक्टली आ जाएंगे. एंड थैंक्स टू द टीम जो पहले पायदान पर मौजूद थी. उनकी इनिशियल्स में एलिमिनेशन के बाद, इनको गेमिंग के एलिमिनेशन के बाद ही टीम S2G को मौका मिला कि वो पहला पायदान उनसे छीन सकें. अब ख़तरा आ चुका है दोस्तों, अब बहुत टेंशन बन चुकी है. इन खासकर खैर S2G ने तो अभी पहला पायदान हासिल किया है. इनको गेमिंग का ये बुरा मैच अगर निकल जाता है, क्योंकि मोमेंटम तो टूटा है, इनका मोमेंटम तो टूटा है अलादीन. और जब भी मोमेंटम टूटता है तो टीम्स अंडर प्रेशर आ जाती हैं कि यार अब तो ख़तरा है, अब नीचे से कोई भी टीम उठकर उनको टेक ओवर कर सकती है. अल्फा 7 पॉसिबली हमें नेक्स्ट मैच के बाद दूसरे पायदान हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है. DRS नीचे आई है, DRS मेरे ख्याल से कर लेगी रिकवर. DRS तीसरे पायदान पर आ जाएगी अगले मैच के बाद. लेकिन नोवा बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है इस आखिरी मैच में अलादीन. इन्फ्लुएंस केमिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है. यस, टीम्स खतरनाक तो साबित हो सकती हैं, नोवा और केमिन, लेकिन IHC को देखें आप, उनको भी मौका दे दिया है फर्स्ट पेज पे आने का, और 7 स्पॉट पे वो आ चुके हैं इस वक्त के लिए. T2 के 8 स्पॉट पे जा चुकी है. DRS चलें ठीक है, वो भी नीचे आई है, 4 स्पॉट पे आ जाएगी. लेकिन वहीं पर फोर्स स्पोर्ट्स को देखें, वो भी पहले पेज की तरफ जा रही है. एंड इमेजिन वो टॉप 3 में फिनिश करें. इट कैन हैपन. फॉरेन टीम 10 स्पॉट पे मौजूद है. गीक फैम एक पायदान फिर से नीचे जाएगी. STE आहिस्ता ऊपर आ रही आती. STE को भी मौका दिया जा रहा है पहले पेज की तरफ आने का. यस, 70 पॉइंट्स ऑलमोस्ट उनके पास आ चुके हैं. पहला पेज तो क्वाइट रीचेबल है. बहुत एक आधे मैच से आप ये लीड मेरे ख्याल से कवर कर लेंगे पहले पेज के टॉप 8 के अंदर अगर आप आना चाहते हैं. फायरफ्लक्स, अल्टर ईगो, लिमैक्स की तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से आज के दिन परफॉर्म किया गया. 60 पॉइंट्स हैं उनके पास. बरी राम भी 60 पर है. लेकिन दुख हो रहा है ये आखिरी नंबर को देखकर और टोटल पॉइंट्स देखकर बहुत दुख हो रहा है अलादीन. 18 रैंक पॉइंट्स हैं सिर्फ वैम्पायर स्पोर्ट्स के पास. 27 किल्स तो हैं, चलें ठीक है, किल्स सही हैं, नहीं आदि, लेकिन भी नहीं सही. 18 किल्स अब नहीं सही. चले थोड़ा बहुत गुंजाइश दे देते हैं, लेकिन वाकई बहुत दुख हो रहा है अलादीन. वैम्पायर स्पोर्ट्स, मैं इनका इंटरव्यू देखना चाहता हूँ. आई रियली वांट द होस्ट टू क्वेश्चन देम कि यार क्या हुआ, क्या आखिर यार ऐसा क्या हो गया कि यार 16वें पायदान पर आए और रैंक पॉइंट्स नहीं हासिल कर पाए. मुझे 16वें पायदान की इतनी टेंशन नहीं हो रही जितनी मुझे इनके रैंक पॉइंट्स देखकर हो रही है. नो आइडिया. आई थिंक वैम्पायर स्पोर्ट्स की जो सबसे बड़ी कमी रही है वो सर्वाइवल ही रही है इस सारे ग्लोबल चैम्पियनशिप के सफ़र में. लास्ट स्पेसिफिकली जो ग्रैंड फाइनल्स था उसके अंदर सर्वाइवल नहीं कर पाती है टीम. किल्स निकाल पाई है और फाइट्स ले पाई है, लेकिन रोटेशन में भी हमने देखा इनको काफ़ी ज़्यादा ये टीम जूझती हुई नज़र आती है वैम्पायर स्पोर्ट्स. सो एज सच अब तो मौका भी नहीं रहा कमबैक का. आप कमबैक नहीं कर पाएंगे. आज के दिन का बस ये लास्ट मैच है. उसके बाद कल के दिन 6 ही मैचेस होंगे और फिर अफरा तफरी चलेगी आती. जो बॉटम पर टीम्स हैं वो कोशिश करेंगी बस वो कुछ भी करें. टॉप की टीम्स हैं वो कोशिश करेंगी कि वो खुद को अपने
अपने स्पॉट्स को मेंटेन करें, और जो मिड में टीम्स हैं यानी कि फिफ्थ ऑनवर्ड, वो कोशिश करेंगी कि पहले पायदान की तरफ किसी तरह से जाएं, अपनी कुव्वत लगाएंगी। सो इस सारी सिचुएशन में फिर अफरा तफरी फैल जाती है आदि, और देखेंगे क्या होता है। अभी कल का दिन बाकी है, बट प्लेयर्स रेडी हो चुके हैं, अगले मैच की तरफ जाएंगे बिना किसी डिस्कशन के। ख़वातीन और उस्ताद, आप सबसे जितने भी लोग चैट में देख रहे हैं, पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक आए। उसके बाद आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि चैट में लाइक करके आप लोग कमेंट करके, पहले लाइक करें स्ट्रीम को, उसके बाद चैट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को स्ट्रीम कैसी लगती है, क्या आप लोग एंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद अपना जो भी आपका पॉजिटिव फीडबैक है, जो भी आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, वो ज़रूर चैट में दें हमें, क्योंकि उसी से हम सीखेंगे। जब तक हमें बताएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक वो चीज़ इम्प्रूव नहीं होगी। बिल्कुल, आपने ये आखिरी जो अल्फाज दोहराए हैं ये बहुत अच्छे दोहराए हैं। इवन आप हमें स्टोरीज़ में टैग कर सकते हैं, आप स्टोरीज़ में टैग ना भी करें तो हाँ आप लगाएं, बल्कि हमें अच्छा लगता है, हमें सीखने को मिलता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग वाकई ही आपको सीखने को मिलता है। मैं ज़्यादा ये समझता हूँ कि जो हेटर्स नहीं मैं कहूँगा यार, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, लेकिन जो आपके ख़ास तौर पे क्रिटिक्स होते हैं वो आपको मजबूर करते हैं सीखने पर। पहले मेरे ओके को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। इसीलिए छोड़ा क्योंकि जब वो नज़र में आया मेरी कि यार हाँ ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोकना है, कम करना है। फिर मैंने उसे कम किया। ऐसी हज़ारों मिसालें आपको मिलेंगी, ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल ने इम्प्रूव ज़रूर किया होगा। लेकिन खैर ख़वातीन और हज़रात, सिर्फ 4 ही मिनट बकाया बाकी हैं और आज के दिन का आखिरी मैच है पबजी मोबाइल ग्लोबल चैम्पियनशिप का दूसरा दिन है। ट्रॉफ़ी पर एक ही नाम लिखा जाएगा। इन 16 टीम्स में से सिर्फ एक नाम उस ट्रॉफ़ी पर लिखा जाएगा। कौन होगा वो किसी को नहीं पता। पॉसिबली ब्राज़ीलियन स्क्वाड्स हो सकते हैं, S2G हो सकती है, नोवा हो सकती है, DRS भी हो सकती है। दिल रुक जाता है सोचते हुए कि यार इतना लंबा सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। $4 मिलियन दाव पर लगे हुए हैं। ग्लोरी है। ये जो चेहरे बैठे हैं यहाँ पर, कितने नए चेहरे होंगे जो कि आपके नए फैंस बनेंगे इस एक इवेंट के बाद। अगर DRS जीतती है, इंडोनेशिया का पूरा मुल्क DRS का फैन जरूर बनेगा, जानेगा DRS को। लेकिन आइए चलते हैं एक ही साथ, अपने दिलों को थाम लीजिए क्योंकि आखिरी मैच है रैंगल का, कुछ भी हो सकता है। इनको का मोमेंटम टूट चुका है ख़वातीन हज़रात। आगाज़ बहुत अच्छा किया गया कल के दिन इनको की तरफ से, लेकिन वो मोमेंटम, वो जो आग थी वो मुझे बुझती हुई दिखाई दे रही है। यह आखिरी मैच हो सकता है जो कि वापस से उनको जगाए और वापस से वो पहला पायदान अपना ले जाएं। लेकिन दूसरी तरफ बरक्स, टीम S2G के पास बहुत मोमेंटम है। आज के दोनों मैचेस मिरामार में डोमिनेशन दिखाई टीम S2G। जी हाँ, S2G के पास मोमेंटम तो मौजूद है और छीनना पड़ेगा ये मोमेंटम बाकी टीम्स को, वरना ये टीम ले जाएगी चैंपियन इस ट्रॉफी, ग्लोबल चैंपियनशिप की ट्रॉफी ये टीम ले जाएगी। लेकिन इस बात करेंगे हम रेंगल के इस मैच की, जहाँ पर फ्लाइट पाथ आपके सामने आता हुआ ख़वातीन और हज़रात प्राइमर्स की तरफ एक फ्लाइट पाथ जाएगा और बड़ा ही एक वेस्टर्न ओरिएंटेड फ्लाइट पाथ रहेगा, जिसमें जो टीम्स ईस्टर्न साइड्स पर बरक्स पिछले रेंगल के सेम बनाना चाहना चाहती हैं, हम उनको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। सर्कल भी सेम बन जाए आती, इमेजिन सर्कल 70 बन जाए फिर से, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक मिलिट्री बेस का सर्कल देखना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ आती। एक मिलिट्री बेस या नोवर फिनोय का सर्कल देखना तो मैं आपको आज के मैच के बाद दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। सेम सर्कल, ओह माय गॉड, मेरे मुंह में भी शक्कर। लेकिन करें इसके लिए हमें BRU और INF की एक व्हीकल्स वाली फाइट देखने को मिल रही थी, लेकिन रियलाइज करते हैं कि सामने वाले प्लेयर के पास अगर गन आ गई तो फिर गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा फैसला किया गया है BRU के प्लेयर्स की तरफ से। INF के लॉ के पास गन तो मौजूद नहीं थी, लेकिन फेडरल एक मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक पिस्टल ज़रूर ले चुके हैं। लेकिन इस जगह पर रहते हुए लूट कहाँ करेंगे? जितना टाइम ये लोग लगा देंगे भागते हुए चलते हुए अपने ड्रॉप लोकेशन तक, उतनी देर में बाकी टीम्स, 1 से 2 टीम्स तो जाहिर सी बात है रोटेट कर ही जाएंगी सर्कल के अंदर। सो आई थिंक सो INF का फैसला थोड़ा बहुत गलत साबित हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं INF के प्लेयर्स, अगर कोई एक आधी व्हीकल उनको मिल जाती है तो फिर ऑब्वियसली
हो जाएगी कवर अप जो भी गलती उन्होंने की है इस मैच के अंदर। ऑलरेडी अपने कन्वेंशनल ड्रॉप लोकेशन हॉस्पिटल की साइड पे लूट कर रहे हैं, उनके बिल्कुल करीब जानी मानी टीम IHC भी लूट करती हुई दिखाई देती है। और याद हो पिछला एंगल, तो ये वो एरिया था जो कि सेवर्नी था, जो कि सबसे ज़्यादा कंटेंशन हमें जहाँ पर देखने को मिली। काफ़ी टीम्स लड़कर एलिमिनेट हुई इस जगह के ऊपर, और चिकन डिनर भी इसी एरिया के नज़दीक से हमें आता हुआ दिखाई दिया। वैम्पायर ई स्पोर्ट्स सर्वाइव कर रही थी उस मैच के अंदर, इख्तितामी फेजेस के अंदर जाने में वो कामयाब रहे। बात करते हैं टीम गॉड लाइक एक स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स की, जिन्होंने इख्तिताम बहुत बेहतरीन किया अपने ग्रुप स्टेज का। और जिस तरह का एग्रेशन है इस टीम के पास, वो आई डोंट नो क्यों दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर आप एवरेज नॉकडाउन देखें तो उस फहरिस्त के अंदर टॉप सेकंड स्पॉट पर है। एवरेज डैमेज के अंदर भी आई बिलीव वो सेकंड स्पॉट पर थे, लेकिन सर्वाइवल की बात है, सर्वाइवल नहीं निकाल पा रहे हैं। एग्रेसिव टीम्स का ये एक मसला निकल रहा है स्टेज में आके। अलादीन बिल्कुल सही, आपकी बातों से मैं एग्री करना चाहूँगा और 100% एग्री करना चाहूँगा। लेकिन चलें, अभी फ़िलहाल लास्ट मैच का आगाज़ हुआ है और क्लैशेस क्यों नहीं हो रहे आदि। हालांकि हम एंड के करीब आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि आज के दिन के इख्तिताम तक क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे ऑन पर्पस, या लगता है कि कल के पहले मैच से होगा ऐसा। बिकॉज किसी भी टूर्नामेंट कल के जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज चूंकि आज आखिरी दिन था नहीं, आखिरी दिन जब आज ये टीम्स जब जाएंगी और जब इंटरनल डिस्कशंस होंगी, तो मेरे ख्याल से ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा क्लैशेस को। क्योंकि शायद आज के दिन ये गुंजाइश होती कि यार हम शायद पहले पेज पे चले जाएं, लेकिन अब गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इस मैच के बाद टॉप 5 की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। सेकंड पेज पे जो सेकंड हाफ में टीम्स हैं, #12 ऑनवर्ड्स टीम्स मौजूद हैं, 12, 13, 14, 15, 16, इन टीम्स के लिए मुश्किल है टॉप 5 तक जाना। तो मेरे ख्याल से इन्हीं टीम्स में से कोई जज्बाती टीम होगी जो कल के दिन ड्रॉप क्लैशेस में जाए, और पॉसिबली दैट कुड वर्क आउट फॉर देम। लेकिन जितना उनको फ़ायदा पहुंचेगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उस टीम को पहुंचेगा जिससे ये ड्रॉप क्लैश लेंगे। ओनली दे एलिमिनेट द अदर टीम। अगर एलिमिनेट कर पाते हैं, खुद हो जाते हैं, तो फिर उसी को फ़ायदा हो जाएगा, 4 किल्स मिल जाएंगे। और चलें, मैं देखना चाहता हूँ ड्रॉप क्लैशेस। आई वांट कि ड्रॉप क्लैशेस हों, बट फिलहाल यहाँ पर एक रोटेशन क्लैश हो सकता था, लेकिन लकीली 4AM भी ऑन द मूव थी। 4AM अगर रुकी होती तो शायद क्लैश बन जाता, और एसओजी के 2 प्लेयर हमें लॉबी जाते हुए नजर आते, और वो टीम जिसने लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त खेला होता वो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाती। ऐसा होता है। रिमेंबर DRS ने जब सेकंड निकाला था, नेक्स्ट मैच में वो अर्ली एग्जिट हुए थे। इनको ने जब एक मैच में सेकंड निकाला था, नेक्स्ट मैच में वो अर्ली एग्जिट लिया था उन्होंने। सो ये चीज़ें चल रही है, जो टीम सेकंड निकालती है वो अर्ली एग्जिट ले जाती है। लेकिन इनको वर्सेस 4AM एक क्लैश फाइट यहाँ बनती हुई नजर आएगी हमें, एंड पॉसिबली दोनों ही टीम्स को अंदाजा है कि यहाँ पे कब रहने वाला है। ड्रॉप क्लैशेस तो देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन अर्ली स्कर्मिशेस हमें बहुत ज़्यादा इस मैच के अंदर देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से 4AM आई है, वो यहाँ पर नहीं भी रुक सकते थे या इन कंपाउंड्स को अबैंडन भी कर सकते थे, लेकिन नोइंग द फैक्ट कि उनके सामने प्लेयर्स मौजूद हैं, स्टिल देव डिसाइडेड टू स्टे हियर एंड हैव अ गुड फाइट विद देम। लेकिन अभी के लिए दोनों टीम्स इंतजार कर रही हैं, लेकिन 4AM दे आर बीइंग एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। शाओ की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि नेट का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेयर को गिराया जाए। इनको अगर थोड़ी सी भी भनक लगती है टीम 4AM को कि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं यहाँ पर, फिर शायद एग्रेस होते हुए भी नजर आएंगे हमें टीम 4AM के प्लेयर्स। लेकिन इनको की तरफ से बेहतरीन फैसला किया गया इन कंपाउंड्स को अबैंडन कर। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख 4AM के लिए भी हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर किल स्कोर करने के लिए आए थे, लेकिन किल्स उनकी आंखों के सामने से ही जिंदा सलामत बचकर यहाँ से निकल गए हैं। और स्वान अब मजीद आगे बढ़ेंगे, स्काउट किया जाएगा, और इनको के प्लेयर्स रीयूनाइट कर लिए जा चुके हैं अपने बाकी टीम के साथ, अपने बाकी दोनों टीममेट्स के साथ। और यही वो वेयर हाउस था जिसके करीब कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा था कि कर्स्ड कंपाउंड साबित हुए थे। 3 टीम्स इंस्टेंटली बैक टू बैक एलिमिनेट हुई थी उन कंपाउंड्स में। जी हाँ, 3 टीम्स वहाँ पर एलिमिनेट हुई थी और कर्स कंपाउंड साबित हुए ज़रूर थे। लेकिन फ़िलहाल नोवा हमारे सामने मौजूद है, एंड नोवा के प्लेयर्स भी रोटेशन कर रहे हैं। अभी 3 से 4 मिनट ही हुए हमें इस मैच में आए हुए, लेकिन अभी से रोटेशन जो है वो तमाम टीम्स की तरफ से ऑलमोस्ट चालू की जा चुकी है। तमाम टीम्स इस वक्त रोटेशन को जो वो प्रेफर कर रही हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि आप अर्ली रोटेशन को जो वो प्रेफर करें। और जिस तरह का मेरे ख्याल से मेटा बन चुका है, अब आपको सेकंड सर्कल
के हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट करना होता है प्रेडिक्ट करके, और अब जितना आपको पहले सर्कल में कह लें कि रोटेशन जल्दी करना होती है, उससे ज़्यादा आप जल्दी जो है वो करते हो जब आप सेकंड सर्कल की तरफ जा रहे होते हो, बिकॉज वो बहुत छोटा हो चुका होता है। लेकिन चलें, DRS को भी हम देख रहे हैं, नोवा वर्सेस IHC पॉसिबली यहाँ देखने को मिलेगा। डेमो यहाँ पर नॉक निकाल सकते हैं, लेकिन पैराबॉय उसी टाइम कवर में चले जाएंगे। फॉर्चुनेटली अभी भी नोवा को नहीं पता कि उनके बैक साइड पर एक टीम मौजूद है। बिल्कुल आदिन, और IHC अगर थोड़ी देर के लिए चेज़ करती है नोवा को तो मे भी शायद एक बैक स्टैप देने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन नोवा सही टाइम पर अच्छा किया, वहाँ पर अपनी बगीज़ उन्होंने रोकी नहीं। ज़्यादातर टीम्स होती हैं वो रुक जाती हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, किसी प्लेयर को लूट चाहिए होती है या आपने स्काउट करना होता है तो आप कंपाउंड्स में ज़रूर रुक जाते हो, ये सोचते हुए कि शायद हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसे लम्हे पर अगर नोवा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर ब्रेक लगा भी दी जाती तो टीम IHC के डेमो इंस्टेंटली नॉक कर सकते थे। लेकिन अभी हायर ग्राउंड पर कंपाउंड्स को होल्ड किया जा रहा है। आप जिमी को देखें, जस्ट लुक एट हिम फॉर अ वाइल। आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन जिमी। 3 प्लेयर्स एक तरफ और जिमी आगे बढ़कर एक मजीद एरिया स्काउट करते हैं अपने लिए, और फिर उस हिसाब से इस टीम की तरफ से खेला जाता है। पैराबॉय भी व्हीकल के अंदर जा चुके हैं। फॉर अ वाइल विल फोकस ऑन देम, क्योंकि उनके रोटेशंस बहुत मज़े की होती हैं। जिस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, स्प्लिट्स होते हैं, नोवा के बड़े एक्यूरेट होते हैं बाकी टीम्स की बनस्बत। लेकिन खैर गीक फार्म भी रोटेशन करती हुई स्कूल के एरिया की जानिब से वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन T2K डोंट डू दैट वंस अगेन। लेजेंड गलत तरफ अपनी बगी मोड़ जरूर लेते हैं, अभी तक सरवाइव भी कर रहे हैं। वापस से सेवेरनी को प्रेफर किया जा रहा है T2K की तरफ से, लेकिन जाएंगे नहीं। आप वाली बात जाएंगे नहीं, बिकॉज सर्कल का जो कह लें कि क्लोज टू एज बन रहा है सेवेरनी पर, और उससे ज़्यादा अच्छे एरियाज उनको शायद मिल सकते हैं T2K उनकी तलाश में रहेगी, और पॉसिबली सर्कल वापस शिफ्ट खा जाए सेवेरनी। लेकिन T2K को फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा, बने बनाए मैचेस मिल रहे हैं यार, यू डोंट हैव टू लूज़ दिस। लेकिन ऑब्वियसली सर्कल का एडवांटेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है एंगल में करता है। एक दो सर्कल्स आपको मिल जाए वो मैटर नहीं करते हैं। अगर 3-4 बन रहे हैं आपके ऊपर, या और लास्ट सर्कल स्पेसिफिकली अगर बन रहे हैं तो फिर तो मैटर करता है। थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड बन गया, ठीक है, ओके, आपने सर्वाइव कर लिया, बट वहाँ तक 16 टीम्स पहले ही बची हुई होती हैं, बाकी भी उसके बाद वाले में अगर आप सर्वाइव कर जाएं तो फिर आप अच्छे 5 पे लेके जा सकते हैं। लेकिन गीक फैम रोटेट करती हुई इसलिए काफ़ी करीब जा रही है। गीक फैम वर्सेस S2G, ये एक फाइट बन सकती है। साइलस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्फॉर्मेशन दी भी तो नॉक नहीं निकाल पाए, इवन एक बुलेट भी कनेक्ट नहीं की गई उनकी तरफ से। बट अब यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करना होगा। मीका काफ़ी लो एचपी मौजूद है। गॉड, एक बुलेट उनको नॉक कर सकती है, एक अच्छी बुलेट उनको नॉक कर सकती है। आई थिंक सो गलत फैसला है गीक फैम का, ये गलत फैसला है। अगर वो इस फाइट से सही सलामत निकल भी जाते हैं, 1 से 2 प्लेयर्स वो अपने गवा देंगे। ड्रॉप शॉट कैल्सी की तरफ से दी गई, दूसरे प्लेयर को भी गिराया गया, लेकिन बैक एंड से गीक फैम के एक प्लेयर स्नाइप्स आते हैं, इंस्टेंटली किल भी कंफर्म कर लिया जाता है। जाते जाते अनफॉर्चुनेटली टीम S2G के कैल्सी किल नहीं कंफर्म कर पाए अपने, हालांकि 2 प्लेयर्स को उन्होंने गिराया, तीसरे प्लेयर को काफी तक डैमेज भी किया। ओके, S2G के बाकी प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, सिर्फ रेज है अकेले। नेट को करते हुए नीचे चले जाएंगे, नेट क्लिक भी करता है, डैमेज करेगा नेट, नॉक भी किया जाता है इनकी तरफ से। रेज वापस से ऊपर जाते हैं, रेज ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू टेक देम डाउन। साइलस अभी तक सरवाइव करते हुए चेस किया जा रहा है इन कंपाउंड्स के अंदर, और एक टॉम एंड जेरी का गेम प्ले हमें दिखाई जरूर दे रहा है। गीक्स दे आर फिनिश्ड। गलत फैसला, गलत रश नहीं करना चाहिए था गीक्स को, ऐसे गीक फैम को ये नहीं करना चाहिए था। आप मल्टी स्टोरी कंपाउंड्स में रुक कर, जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है वहां पर रुक कर यूटिलिटी स्पैम कर सकते थे। हालांकि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स थे तब वहां पर टीम S2G के अलादन, सिर्फ 2 प्लेयर्स थे मौजूद, और चारों के चारों प्लेयर्स को एलिमिनेट करने में कामयाब रही टीम S2G। हाँ, चारों के चारों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया गया, लेकिन एक और स्लामन BRU वर्सेस DRS के 2 प्लेयर्स में मौजूद हैं। BRU हैज द एडवांटेज, लेकिन रुजोजी गेट्स टेकन डाउन, और डेल्टा के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, अब अकेले कुछ करना होगा। बट बैक साइड से प्लेयर आ जाएंगे विद अ शॉटगन, और डेल्टा इज डन, DRS इज डन। DRS के अब अकेले प्लेयर मौजूद हैं। एक और स्लामन, दिस टाइम इट्स 4 AM वर्सेस टीम वोल्स। यही वो चीज जिसका मैं इंतजार कर रहा था। एंड वोल्स वर्सेस 4 AM, एवरी टीम इज बीइंग सुसाइडल, और वोल्स यहाँ से एक प्लेयर गवा कर फॉल बैक कर जाते हैं, लेकिन मेमोरी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। उनका व्हीकल बर्स्ट किया जाएगा, मेमोरी के नॉट फॉल बैक, मेमोरी को डैमेज पड़ेगा, लेकिन वहीं पर 4 AM के प्लेयर रिमेंबर का कंफर्म किया जाएगा उनकी तरफ से। एंड 4 AM अपने प्लेयर्स को अप करती हुई नजर आ रही है। टीम वोल्स एक और बुरा मैच,
एक और बुरा मैच जाता है टीम वुल्व्स का। ओवर एग्रेस उन्होंने कर दिया, लेकिन अब कल मुझे लगता है ये ड्रॉप क्लैशेस की तरफ जाने वाले हैं। वुल्व्स इस मैच के बाद इनिशियल्स में एलिमिनेशन के बाद ड्रॉप क्लैशेस की तरफ जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी सर्वाइव वो कर रहे हैं अपने 1 से 2 खिलाड़ियों के साथ। टीम फायरफ्लक्स भी रोटेशन दिखाती हुई नजर आ रही है। क्या इनकी भी फाइट होने वाली है रोटेशन के दौरान? क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी टीम्स को देखा है, चाहे वो ब्रू हो चाहे वो गीक फैम हो, सब रोटेशंस के दौरान किसी ना किसी फाइट में आ रहे हैं। लुक एट दैट, टीम आईएचसी के हाथों पकड़ा जाता है उनको, और फायरफ्लक्स के कैच ऑलरेडी नॉक हो चुके और इंस्टेंट किल भी उनका कंफर्म कर लिया जाएगा गॉडलेस की साइड से। और ऐसे वेयर हाउस में स्प्लिट मुझे इसकी समझ नहीं आई थी आदि, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मुझे अभी भी उस स्प्लिट की समझ नहीं आई कि वो क्या स्प्लिट था। बिल्कुल आदिन, आई थिंक सो गलतियां हो जाती हैं डीआरएस, ऑब्वियसली सारी टीम्स गलतियां करती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर अभी भी उसी तरह की एलिमिनेशन हमें देखने को मिलती है तो फिर हाँ, हम कह सकते हैं कि गलती की गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ इंटरनल जो इनकी थी कम्युनिकेशंस, उसमें मसला आया। जिस तरह इनको को हमने देखा, इनको किधर है, इनको हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही अभी के लिए। सो इनको को मैं देखना चाहता हूँ क्या उन्होंने सीखा है अपने पिछले मैच के परफॉर्मेंसेस से। खैर इनिशियल्स में भी एलिमिनेट नहीं हुए, इनफैक्ट अभी भी 15 टीम्स बाकी सर्वाइव कर रही हैं। सो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। आईएचसी के डेमो ने रंगे हाथों पकड़ा टीम वीपीई को। यही गलती है वीपीई की, लेट रोटेट करते हैं, अलग अलग रोटेट करते हैं, और वीपी के आखिरी प्लेयर भी इस मैच से बाहर हो चुके हैं। वीपीई अननेसेसरी फाइट्स में आ रही है, स्काउटिंग आई थिंक सो कम की जा रही है, जिसकी बनस्बत वो एलिमिनेट हो जाते हैं रोटेशंस के दौरान, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर पा रहे बाकी टीम्स के ऊपर। यही एक वजह हो सकती है। लेकिन खैर टीम नोवा, क्या स्क्वाड है अलादीन, मज़ा आता है इनको देखने का कि यार वाकई सुलझा हुआ स्क्वाड है, सीख रहा है। और लाइक कैन यू इमेजिन, पीएमजीसी साल बाद होता है और उस साल के अंदर अंदर ये अपने आप को इतना कंटेन्ड रखते हैं, और हर पीएमजीसी से, हर अगला पीएमजीसी पिछले पीएमजीसी से ज़्यादा मुश्किल होता है। इस दफ़ा ब्राज़ीलियन टीम्स की डोमिनेशन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल नोवा अपने आप को टॉप 5 में उन्होंने रखा हुआ है, और कल के दिन पॉसिबली वो टॉप 3 की तरफ, या इस मैच के बाद टॉप 3 में वो आ जाएं। ये होता है गेम प्ले, बेहतरीन गेम प्ले। बहुत खुशी हुई है S2G को देखकर, नोवा को देखकर, डीआरएस को खासतौर पर देखकर। लेकिन सालोडी स्पोर्ट्स के एक्शन जो आप बात कर रहे थे कि एक्शन में नहीं आ रहे, वापस से एक्शन में आ चुके हैं। पिका एफएफ के सोल के को नॉकडाउन करते हुए व्हीकल से एलिमिनेशन निकाली गई है उनकी साइड से, और एफएफ भी इस मैच से बाहर कर दी जा चुकी है। टीम सालोडी स्पोर्ट्स, गॉड लाइक एक्सटालोडी स्पोर्ट्स, अभी सर्वाइव कर रही है अपने 4 खिलाड़ियों के साथ। रिवाइवल दिया जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन नोवा अपना जाल बिछाए हुए टीम ऑल्टर ईगो को एलिमिनेट करना चाहती है। ऑल्टर ईगो को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, एज पर है। नोवा को वो गेट की भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेज पर रहते हुए स्टेल्थीनेस, अपने प्लेयर्स को अपने साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा टीम्स जो एलिमिनेट हो रही है उनकी यही गलती है कि अपने प्लेयर्स को यूनाइट वो नहीं कर पा रहे, कि यूनिटी के साथ वो खेल ही नहीं पा रहे। स्प्लिट्स के अंदर आते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आईएचसी यहाँ पर स्लैमिंग करती हुई A7 की तरफ आ जाएगी। वो अकेले मौजूद हैं इस सारी सिचुएशन में। हालांकि इस वक्त 3 प्लेयर्स अंदा हैं A7 के, लेकिन A7 के बाकी प्लेयर्स कहाँ रहेंगे? अरे वो ग्रेनेड स्पैम कर रहे हैं। A7 के नॉक्ड प्लेयर को रिवाइवल नहीं मिल रहा, ग्रेनेड फिर से जाएगा। अरे वो यहाँ काफ़ी लो एचपी कर देते हैं टीम आईएचसी के प्लेयर को, लेकिन AE वर्सेस नोवा, पैराबॉय टेक्स वन डाउन। पैराबॉय एक और प्लेयर को स्पॉट करेंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, परफेक्ट स्कोप ओपनिंग। लेकिन पोटैटो यहाँ पर डाउन करते हुए नजर आएंगे, पैराबॉय को भी। और अब यहाँ पोटैटो को इस सिचुएशन में एक और प्लेयर को स्पॉट करना होगा, एंड द लास्ट मैन इज आल्सो आउट। थर्ड पार्टी हो जाती है बैक साइड से, और A7 के प्लेयर करियो यहाँ पर एक किल कंफर्म कर जाते हैं, लेकिन AE को टाइम नहीं मिलेगा रिवाइवल का। पॉसिबली मिल सकता है, लेकिन जोन डैमेज दे रहा प्लेयर्स को। Oh no. Oh my God, I want them to survive. I want them to survive, लेकिन नहीं वो कर पाएंगे, और वुल्व्स के ब्यूटीफुल किल कंफर्म कर लेंगे नॉक प्लेयर्स का, जो प्ले जोन से नॉक भी हुए। लेकिन A7 वहां पर लड़खड़ाती हुई टीम आईएचसी के गॉडलेस एग्रेस किया उन्होंने, मिथिक को भी नॉक किया गया, एलिमिनेट भी कर दिया गया। कार्य हो सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर वो नहीं पाएंगे क्योंकि नॉक्ड है। रीवो बैक एंड पर मौजूद है, बगी फट जाएगी, बस हो सकता है व्हीकल बस भी हो जाएगा। दोनों के दोनों प्लेयर्स नॉक हो जाएंगे। टीम 4 AM के प्लेयर्स बैक एंड से बहुत अच्छे तरीके से स्काउट करते हैं और पकड़ते हैं टीम वुल्व्स के प्लेयर को। वुल्व्स को मैं देखना चाहता था अच्छा परफॉर्म करते हुए, AE को मैं देखना चाहता था, AE डेडली हो सकती थी, लेकिन जोन के बाहर फाइट जो उन्होंने ली,
नुकसान पहुंचता है उनको भी, नोवा को भी। व्हीकल्स एलिमिनेशंस बहुत खूबसूरत निकाले थे ई ने नोवा के ऊपर, लेकिन अभी 4AM के पास अच्छा खासा चांस है इस मैच को लेकर जाने का। चारों के चारों प्लेयर्स हैं मौजूद, T2K के पास भी अच्छा चांस है, उनके भी चारों के चारों प्लेयर्स मेन एडवांटेज उनके पास है। इनके अलावा सिर्फ टीम गॉड लाइक एक स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स है जिनके 4 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, INF के भी कर रहे हैं अभी के लिए, लेकिन INF सर्कल के प्ले जोन से फंसती हुई, थोड़ा बहुत उनको जल्दी रोटेट अप करना पड़ेगा। प्ले जोन चलता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। 5th फेज ऑफ द मैच है। ब्रू के टाइगर अपने नाम की लाज रखते हुए नेट स्पैम कर रहे हैं। फुल स्टॉप लगाया जाएगा उनकी तरफ से S2G कर रहे हैं इसके ऊपर, और 2 प्लेयर्स को गिराने में कामयाब रहे। मोलोटोव हिट करेगा, हिट नहीं करेगा। ब्रू भी यहां पर आ चुकी है, रशिंग कर दिया जा चुका है उन्हीं की साइड से। किंग्सो एलिमिनेशन निकालेंगे, मोलोटोव उनको भी लगता है, लेकिन बच जाएंगे, अभी के लिए सर्वाइव करेंगे। टीम बलिराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स भी 6 किल्स कर लेकर जा चुकी है। अभी तक लॉबी में हाईएस्ट किल्स 6 हैं, और जो कि बलिराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स के हैं। क्या ये टॉप 5 के अंदर कल के दिन अपनी जगह बनाएंगे, ये सवाल है असल, और इसके लिए उनको इस मैच का चिकन डिनर चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनको वर्सेस टीम INF की फाइट बनती हुई, नेने बेते नेट निकालते हैं, कुक किया जा रहा है, नेट प्री फायर्स किए जाते हैं। सारे के सारे जो एंकर पॉइंट्स है सबको कवर करने की कोशिश की जा रही है। नेने बेते टेक्स 1 डाउन, कियोस्की गेट्स एलिमिनेटेड, एंड टीम INF इज आउट ऑफ द मैच ऑलमोस्ट। सिर्फ आखिरी प्लेयर लिल बॉय रह चुके हैं, ज्यादा देर तक वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, एंड ही गेट्स टेकन डाउन। और इनको इस मैच में बहुत अच्छे तरीके से खेलती हुई सीखा है अल्लाह ने, वाकई सीखा है। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, एक के बाद एक बड़ी फाइट होती है, एक के बाद एक ऐसी फाइट होती है जिसमें लुक देख रहे हैं द टीम सर्वाइविंग, और अभी 5वां सर्कल है अल्लाह। Yes, this is the 5th circle और 6 टीमें बसी हुई हैं। यही तो देख रहा, यही तो मैं कह रहा था कि क्यों नहीं हो रहा अभी तक। आखिरी दिन आने वाला है और अभी तक टीम्स I am enjoying this so much. Everybody is really enjoying और आपको पता है कि ये नॉर्मल हो जाएगा नए मेटा के बाद, नए कल पॉइंट के सिस्टम के दिन, बाद। कल के दिन जी यस, ये नॉर्मल वाकई नहीं, कल के दिन नहीं, खूबसूरत। और नए इस तरह point का system जोन के का बाद मेटा, नॉर्मल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन इस तरह का जोन का मेटा जहां पर जोन आपको कह रहा है कि सर्वाइव करो। ओह माय गॉड, सर्कल एक और स्लामिंग बनता हुआ इनको वर्सेस T2K यहाँ पर इनको 2 प्लेस डाउन कर चुकी है, दोनों प्लेस किल कंफर्म किया जाएगा। लेकिन बैक इन से नेने बेते किल कंफर्म करते हुए विटाली के लिए बचेंगे, विटाली का किल कंफर्म कर जाएंगे। T2K भी अभी तक जिंदा है आदि, और चारों प्लेयर जिंदा है उनके, और 5 किल्स भी मौजूद है उनके पास। Now we have 4 स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स as well. Yes, we have 4 squads with 4 men standing. आदि 4 स्क्वाड्स इनके 4 प्लेयर जिंदा हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे देखकर। ब्रू का सर्वाइवल, टीम स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स का सर्वाइवल, टीम T2K अभी तक सर्वाइव कर रही है। 4AM इनफैक्ट अभी तक सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है। सारी बड़ी बड़ी मछलियां इस मैच से बाहर हो चुकी हैं, सिवाय इनको के जिनके 2 प्लेयर्स हैं, और ज्यादा देर तक उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। अभी देखना पड़ेगा कि किस लोकेशन पर है, किस एरिया को उन्होंने होल्ड किया हुआ है। पिंच डाउन अगर हुए तो फिर तो ज्यादा देर तक वो ना सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन 4AM वो चिकन डिनर जरूर लेकर जाना चाहेंगे। अभी इंतजार किया जा रहा है सर्कल के शिफ्ट का, कोई भी टीम अब स्लैमिंस नहीं दे रही, सिर्फ इंतजार कर रही है अगले सर्कल के शिफ्ट का, जो कि चंद सेकंड्स के अंदर मंजर आम पर आ जाएगा। 35 सेकंड्स के अंदर ये जोन चलना शुरू हो जाएगा, और 1 मिनट के अंदर अंदर लगभग आपको अगला फेज ऑफ द मैच देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इनको कि स्क्वाश और नेने बेते काफ़ी कंटेन्ड खेल रहे हैं। किल्स निकालने के बाद वो थोड़ी देर सर्वाइव करना चाहेंगे, शायद अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स वो लेकर जा पाएँ, टॉप 3 तक उनके आने की कोशिश ज़रूर है। लेकिन आप 4AM का स्प्लिट देखें, सारी की सारी टीम्स पर वो नज़र रखे हो। लेकिन T2K दे आर बीइंग एग्रेसिव, आगे बढ़ चुके हैं। रिग और लेजेंडरी परफॉर्मेंस इनको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे बी शायद हमें 4AM आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन सर्कल यहाँ से शिफ्ट खा चुका है, छठा फेज शुरू हो चुका है। T2K को जल्द से जल्द इस फाइट को इख्तिताम पर पहुंचाना है। टीम इनको को अपने आप को डिफेंड करना है, और उसी के चलते साथ स्मोक्स भी डिप्लॉय उनकी तरफ से कर लिए जा चुके हैं। नेने बेते कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किल्स वो इस फाइट के अंदर निकाल कर लेकर जाए, लेकिन नेट से बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नेट से काफी काम खराब कर देते हैं। एक प्लेयर नॉक हुआ, एक प्लेयर घुटनों पर आया, तो इस मैच से बाहर कर दी जाएगी टीम इनको ऑलरेडी टॉप 3 के अंदर है। पिछले 2 मैचेस की बुरी परफॉर्मेंस के बाद इनको को ये मैच चाहिए ही चाहिए। ये 4 किल्स, ये 2 से 3 किल्स उनको निकालने हैं। संदेश को नॉक जरूर किया गया इनको की तरफ से, लेकिन इंतजार किया जाएगा। सिर्फ अभी नेने बेते प्री नेड्स, फॉलोइंग नेड्स, ब्लाइंड नेड्स थ्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। रिग आ जाते हैं अंदर की तरफ, शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए स्पॉट डाउन किया जाता है रिग को, और रिग गेट्स टेकन डाउन। नेने बेते मजीद किल्स कंफर्म करते हुए अपनी किल टाली के अंदर इजाफा कर लिया जा चुका है। नेने बेते ऊपर वाले पोर्शन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। एक प्री मॉलो स्पैम कर दिया जा चुका है, और मॉलो की जद में लेजेंड आ चुके हैं। लेजेंड इज लो ऑन एचपी, गेट्स टेकन डाउन, और टीम T2K के 2 प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने में कामयाब रहे। इनको के ये 2 शहजादे, लेकिन T2K
अभी भी बाजी हाथ से नहीं निकली। जेन को रिवाइव देना है संदेश को, लेकिन नहीं दे पाएंगे, बाहर कर देंगे इस मैच से संदेश को टीम इनको के प्लेयर। जेन 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 अब सरवाइव करना है। T2 के थोड़ी देर पहले 4 प्लेयर्स के साथ जिंदा थी अलादीन, इनको के 2 प्लेयर्स कैसे 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हैं। खूबसूरत। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी गलती की जाती है की तरफ से यहाँ पर, या फिर कह लें कि टीम इनको अच्छा खेल जाती है एंड इनको के नए बेहतर सर्कल में भी जगह बनाना चाहेंगे अपने लिए और प्रेजेंट पॉइंट्स भी मजीद लेना चाहते हैं, लेकिन 2 प्रेजेंट के जिंदा रहेंगे। एसटी के एक्शन डैमेज काफ़ी पड़ रहा है, हाइट से गुड ज़्यादा स्पॉट कर चुके हैं। 4M यहाँ से एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेने देना चाहेगी टीम एसटी को सर्कल के अंदर, अगर सर्कल की तरफ बन जाता है। लेकिन एसटी के पास अभी हार्ड कवर भी मौजूद है कुछ प्लेयर्स के पास, लेकिन वहीं पर जेन जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाएंगे। T2 के इस मैच में सेकंड डिनर का ख्वाब जोन के बाहर ही ब्लू हो जाता है। लेकिन अलादीन अभी तो मैच आसान हुआ था, अभी तो मैच आसान हुआ था। दे हैड द कंपाउंड्स, नो वन हैज द कंपाउंड बट दे हैड इट। व्हाट शुड आई से? बिल्कुल जी, लेकिन मुझे दुख हो रहा है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर नए बेहतर मौजूद है वहाँ पर अगर ये टीम आ जाती, टीम इनको एलिमिनेट करके, तो ऑब्वियसली उसके बाद सर्वाइवल जो काफ़ी आसान हो जाता है इस टीम का। लेकिन 4M यहाँ पर मौजूद है, 3 टीम्स ऐसी मौजूद, इनके 4 प्लेयर्स जिंदा रहेंगे, तो ये फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी के लिए। लेकिन BRU बुरीराम यूनाइटेड स्पोर्ट्स से गलती की जाती है, खमियाजा भुगता जाता है। सर्कल में योरो पुश किया जाएगा। इनको के नए बेटे अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे, वो जाते जाते भी किल्स कंफर्म कर रहे हैं भाई। खूबसूरत 4 किल्स, थोड़ी देर पहले सिर्फ 3 किल्स इनके पास मौजूद थे और अब 7वां किल भी कंफर्म कर लिया जा चुका है। बिल्कुल, उनके काफी करीब ग्रेनेड गिरा है और वो अभी भी जिंदा है। यस, ये स्टिल अलाइव, मैन ऑफ स्टिकी। खूबसूरत। लेकिन अच्छा अलादीन, आप बताइए 4AM या गॉड लाइक एक्सटालवर्ड ई-स्पोर्ट्स, किसका चिकन है? STE। देखें, STE लास्ट फाइट में STE से आप नहीं जीत सकते। लास्ट फाइट I'll go with STE2, मुझे वाकई लग रहा है STE 4M के साथ, लेकिन कुछ let's भी go हो with सकता है। 4M, चले मैं 4, चलें ठीक है, राइवलरी बनाते हैं। 4AM के साथ मैं जा रहा हूँ, तो अब हमारी एक राइवलरी शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स, अब आप देखें जरा कैसे एलिमिनेट होती है टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स। लेकिन फिलहाल 4AM के ऊपर टैग्स रजिस्टर किए जा रहे हैं। स्वान, यू शुड सर्वाइव राइट नाउ। नैने बेते को अगर स्पॉट आउट ना किया गया अलादीन, तो बहुत बुरा बैकस्टैप रजिस्टर कर सकते हैं। 4AM के प्लेयर सर्कल के अंदर तो है, लेकिन जिस जगह पर है कंप्लीटली ओपन है वो एरिया, कुछ फायदा उनको पहुंच रहा है जो स्मोक्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। लेकिन अगर स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो 4AM के प्लेयर्स को वो स्पॉट कर पाएंगे, क्योंकि कवर थोड़ा बहुत उनके पास मौजूद है दरख्तों की सूरत में, और कुछ स्टोन्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, हार्ड कवर मौजूद है उनके पास। लेकिन 4AM एक गलती मुझे दिखाई दे रही है कि सारा का सारा स्क्वाड सिर्फ एक ही जगह पर है। अगर स्प्रे किया जाता है डिफरेंट एंगल से टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, तो 2 से 3 प्लेयर्स हमें नॉक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उनके पीछे बिल्कुल स्काई ओनली मौजूद है। किंग्सो चले एक डिफरेंट एंगल पर है, वो स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के लिए मुश्किलात बना सकते हैं, लेकिन स्काई ओनली बहुत बुरा बैकस्टैप दे सकते हैं अगर वो चाहे तो। बिल्कुल जी, लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखें तो टीम एसटी वर्सेस इनको के इस 1v4 फाइट में इनको के नए बेहतर के ऊपर ग्रेनेड चाहता है, ईस्ट सो लो ऑन एचपी, बट फिर भी अपने आप को हील करेंगे एंड ईस्ट रेडी फॉर फाइट एज वेल। बट मेरे ख्याल से जोन उनको पुश करेगा और वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जोन के हाथों आप देखें उनको डैमेज काफ़ी पड़ रहा है और सामने उनके ब्रोकन व्हीकल भी है जिसके कवर में वो जा सकते हैं, बट अगर वो वहाँ तक जाते हैं तो वो स्पॉट भी हो सकते हैं। लेकिन एक्शन स्टिल ट्राइंग, बट वहीं पर किंग्सो उनको स्पॉट करते हैं और इस सोलो प्लेयर की कहानी ख़त्म की जाती है। बिल्कुल, और टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स का अगला निशाना टीम 4AM बनने वाली है। एक आधी बुलेट टैग भी की है, 50% HP पर लेकर आए एक प्लेयर को 4AM के, लेकिन किंग्सो काम खराब कर सकते हैं। टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर बिल्कुल सामने है और क्रॉसेस भी जमा लिए जा चुके हैं। लेकिन व्हाट जस्ट हैपेंड हियर, टीम 4AM के तीनों प्लेयर्स नॉक हुए और एक प्लेयर गुड शाओ अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के टॉप नेट का इस्तेमाल करते चलते साथ तीनों प्लेयर्स को इस मैच से बाहर कर दिया जा चुका है। गुड शाओ इज सर्वाइविंग, बहुत थोड़ी HP के साथ अभी उनकी जान बख्शी कर दी जा चुकी है, लेकिन स्मोक का खत्म होते साथ ही नहीं विल गेट एलिमिनेटेड। लेकिन ब्रू वर्सेस टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स बन चुका है और ब्रू को खड़े होना पड़ेगा। टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स का एक प्लेयर नॉक है, रिवाइव दिया जा रहा है और सिर्फ एक ही प्लेयर बाकी है जिसको वो पकड़ सकते हैं। ब्लाइंड फायर्स किए जा रहे हैं, दे डोंट नो टीम स्टारलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर कहां पर है, लेकिन डिफरेंट एंगल से किंग्सो बगी लेकर आगे जाते हुए, बगी से नहीं नॉक कर रहा, नॉक करते हैं बगी से। किंग्सो दांत दूंगा मैं इस कॉन्फिडेंस को, लेकिन टॉप अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। विल ही बी एबल टू डू द वॉटर, गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे, वो जस्ट लुक एट हिज IQ। लेकिन ब्रो बरेराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स फाइनली वो लम्हा आ चुका, वो घड़ी आ चुकी जहां पर बरेराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स भी
चिकन डिनर की उस फहरिस्त में अपना नाम लिख चुकी है पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप के ग्रैंड फिनाले का ये चिकन डिनर कितना अहम है आपको उनकी खुशी देखकर ही अंदाजा हो चुका। मैच नंबर 12, आखिरी मैच, आखिरी सेकंड लास्ट डे है, पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप खत्म होने वाली है, लेकिन बरेराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स की कोशिशें, उनका जज्बा वो नहीं खत्म हुआ अलादीन। बिल्कुल जी, और ये कोशिशें रंग ले आती हैं, चिकन डिनर भी निकल आता है इस टीम का। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी ये टीम। कल के दिन भी अगर आपने देखा एक भी अच्छा मैच इनको नहीं मिला था, आज के दिन भी कोई ऐसा इनको बेहतर मैच नहीं मिलता, लेकिन लास्ट मैच में जो इनकी कोशिशें थी वो अच्छे काफ़ी रंग ले आती हैं एंड दे आर हैप्पी एंड दे ऑब्वियसली डिजर्व टू बी हैप्पी। और लास्ट मोमेंट पे जो किया इन्होंने, गाड़ी के पीछे एसटी के प्लेयर फ्रॉन डाउन थे एंड उनको गाड़ी लाकर मारी जाती है एंड कवर से बाहर निकाला जाता है उनको उस सिचुएशन में, और उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी अच्छा चिकन डिनर निकाल के अगर वो कंप्लीट हो जाता अलादीन फिर मुश्किलात बन जानी थी, क्योंकि ब्रू के प्लेयर्स डिफरेंट एंगल पर थे, स्पॉट डाउन किया जा सकता था। एसटी के पास वो छोटी सी रिज का एक हाई ग्राउंड एडवांटेज भी था, तो सही टाइम पर जिसने भी ये कॉल दी है किंग्सो ने अपने आप को अगर ये कॉल दी है तो मैं दाद दूंगा इस चीज़ को, लेकिन कमाल यार, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये रिस्क उठाना बहुत इम्पैक्टफुल है। जी हाँ, देखें वो हमेशा ये बात मैं करता हूँ कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है। ये एक कोटेशन भी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और यू गोटा रिस्क इट फॉर द बिस्किट। आदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको बिस्किट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अब मैं भी इस मैच के बाद रिस्क लूंगा ताकि मुझे बिस्किट मिले, लेकिन खैर ख़वातीन व हज़रात, खुशी आपको देखने को मिल रही है प्लेयर्स के चेहरों पर। अरीना बहुत खुशी हुई है मुझे इंडोनेशियन फ़ैन्स का यहाँ पर आना। जो भी इंडोनेशियन फ़ैन्स देख रहे हैं या जिनके कुछ जानने वाले, उनको मेरा पैगाम ज़रूर दिएगा कि बहुत खुशी हुई है। ई स्पोर्ट्स के ये जो चाहने वाले हैं यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आए हैं। मैं सबसे ज़्यादा दाद आप लोगों को दूंगा जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं कहीं से भी, नेपाल से। आई नो इंडियन जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं ई स्पोर्ट्स के, वो भी उर्दू स्ट्रीम देख रहे हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आप कहीं से भी देख रहे हो, आई रियली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। आप लोग सभी हो मिलकर ग्रो करेंगे और इस ई स्पोर्ट्स को हम आगे ज़रूर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप जरा खुशी देखें, मसला दिन लड़कों के चेहरों पे जो मुस्कुराहटें हैं वो रुक ही नहीं रही। बिल्कुल जी, मुस्कुराहटें रुक नहीं रही लड़कों के चेहरों पर, और क्यों रुकेंगी? चिकन डिनर तो निकाला है। इट्स नॉट इजी टू गेट अ चिकन डिनर इन दिस लॉबी, इन सच लॉबी। लेकिन चलें, आप मेरे ख्याल से खुश तो आप भी होंगे आदि काफ़ी। आप ब्रू ब्रू कर रहे थे एंड ब्रू यस फाइनली परफॉर्म कर जाती है। ना परफॉर्म करने से बेहतर है कि आप परफॉर्म कर जाएं, चाहे एक ही मैच क्यों ना हो। लेकिन खैर ये मैच बहुत सनसनीखेज रहा। 5वें सर्कल के अंदर सिर्फ 6 टीम सर्वाइव कर रही थी, सो आप इंटेंसिटी देख सकते हैं। जो गहमा गहमी का आलम था वो आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत हमें फिनिशेस देखने को मिले इस मैच के अंदर। एंड लुक एट दैट, अभी जो एक मैं कहूँगा एक अंडर प्रेशर मूव मैं इसे ज़रूर कहूँगा ब्रू की तरफ से, जिसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल ज़रूर किया गया। काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर थे ये लोग, लेकिन उस सारे प्रेशर को हटाया गया उस एक बगी के रश के ज़रिए और चिकन डिनर हासिल कर लिया गया। स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ उनके साथ। लेकिन मैं स्टिल दाद दूंगा उस मूव को जहाँ पर टॉप गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे अलादीन। अगर वो थोड़ी देर गाड़ी के अंदर रहते तो शायद ब्रू के प्लेयर्स उनको स्पॉट ना कर पाते। हाँ, व्हीकल बस्ट हो जाता और होने भी वाला था, जो कि जिसकी वजह से उनको बाहर निकलना पड़ा। दैट IQ वाज अमेजिंग। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया उस मूव को। वो रंग नहीं लेकर आया, लेकिन अच्छा लगा देखने में यार कि इतनी प्रेशराइज सिचुएशन में भी प्लेयर्स का दिमाग काम करता है यार कि अच्छा चलो ये करके देखते हैं। खूबसूरत करता है या उन्हें करवाना पड़ता है आती, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ तक जितने भी प्लेयर्स आए हैं, तमाम प्लेयर्स अपने रीजन से बेस्ट माने जाते हैं और बेस्ट टीम्स उनकी जो वाबस्तगी है, तो ऑब्वियसली IQ आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कहीं पर भी इनका जो लैक करता होगा। एंड आपने देखा है बहुत ज़बरदस्त खेल दिखाया इनकी तरफ से। लेकिन चलें, आज का दिन बेहतर रहा है कल के दिन की निस्बत। अगर आज के दिन मैं बात करूं गन फाइट्स की, वो ज़्यादा थी। आज गन फाइट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कल थोड़ा सा ज़रा हम देख लेते कि बच आकर सब खेल रहे थे और कंप्लीट फाइट्स नहीं देखने को मिल रही थी हमें। 4v4 फाइट्स हमें कल के दिन नहीं देखने को मिली। आज वो जो ख्वाहिश थी मेरी 4v4 फाइट की, वो पूरी हो गई है और आई बिलीव फैंस की भी पूरी हुई होगी जो चैट में मौजूद है।
बिल्कुल लादेन, और मेरे ख्याल से कल का दिन मज़ीद बेहतर होगा आज के दिन से भी। अगर आज के दिन के आखिरी मैच में ऐसा हुआ है तो कल के दिन के आगाज़ में भी ऐसा ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि कल सुसाइडल गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। वो टीम्स जो नीचे हैं उनके पास खोने को तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन पा वो सकते हैं कुछ कल के दिन। 2-3 पायदान भी अगर वो ऊपर जाते हैं तो प्राइस पूल में अच्छा खासा फ़ायदा मुनाफा उनको ज़रूर होगा। लेकिन यू नेवर नो व्हेन यू टेक अ ड्रॉप क्लैश, या जब आप फाइट लेते हैं आपको ये नहीं पता होता कि सामने कौन है। तो जो सामने वाला है अगर वो टॉप टियर टीम्स हैं और वो एलिमिनेट हो जाती हैं तो फिर सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक गंभीर बन जाएगी पहले पेज के ऊपर। कुछ भी हो सकता है। कल का दिन बड़ा ध्यान से, बड़ा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर फाइट्स लेनी पड़ेंगी। ख़ास तौर पे जो पहले पेज पे टीम्स हैं, टॉप 5 पे टीम्स हैं, और वो जिनका कल के दिन बेसिकली टारगेट फर्स्ट स्पॉट है या टॉप 3 है, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा कल के दिन, बहुत चैलेंजिंग। यस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कल का दिन जो है वो कह लें कि कम बैक का दिन नहीं होगा आई बिलीव। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी दिखा दिए, जो पहले पेज तक आ चुके हैं, दे कैन डू समथिंग, कुछ वो कर सकते हैं, वरना बाकी टीम्स के लिए इट्स डन। लाइक जो सेकंड पेज पे हैं, जो सेकंड पेज पे स्पेसिफिकली नीचे की तरफ हैं, इट्स डन फॉर देम। वो कोशिश कर सकते हैं कि कुछ करें, कुछ जान शान मारें अपनी, और कुछ पॉइंट्स वगैरह बटोरें, लेकिन टॉप 5 में नहीं आ सकते अब मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। डू यू बिलीव कि ब्रू टॉप 5 में आ सकती है? आदि ब्रू अलादीन कल के 2 मैच बहुत अच्छे निकालने पड़ेंगे, शुरू के बहुत अच्छे निकालने पड़ेंगे जिस तरह उन्होंने ये मैच निकाला है। और आप ये देखें, ये मैच भी आसान नहीं था ब्रू के लिए। अगर वो बगी लेकर रश ना करते तो इस मैच का भी चिकन डिनर उनको नहीं मिलना था। स्टारवुड ई स्पोर्ट्स के पास ज़्यादा एडवांटेज था, छीना गया चिकन डिनर। जैसे आप मेंशन करते हैं कि छीना गया चिकन डिनर, सो ब्रू को चिकन डिनर छीनना पड़ेगा कल के दिन, ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिलने वाला कल के दिन ख़ास तौर पे। सो जो छीनने वाला काम है वो बड़ा मुश्किल होता है स्टेज पे, फाइनल्स के, ग्रैंड फाइनल्स के आखिरी दिन में चिकन डिनर आप इतनी आसानी से छीन नहीं सकते। सो आई थिंक बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले 2 मैचेस के बाद पता चल जाएगा, कल के पहले 2 मैचेस के बाद। खबर दिनों साथ, लेकिन आज के दिन का होता है इख्तिताम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कर, लेकिन जाने से पहले आदि भी कह रहे होंगे किधर जा रहा है भाई, रैंकिंग्स तो दिखा दो अल्लाह के बंदे। बिल्कुल आपको रैंकिंग्स दिखाई जाएंगी, वही सोच रहा था, रैंकिंग्स अभी आ जाएंगी आपके सामने। आप फिक्र क्यों लेते हैं, परेशान क्यों होते हैं? आप टेंशन ना लें, अभी थोड़ी सी ज़रा अनाउंसमेंट्स वगैरह चल रही हैं और थोड़ा सा ज़रा डिस्कशंस वगैरह भी चल रही हैं अभी। और आप देखें कि मुझसे और आदि से ज़्यादा जो व्यूवर्स है वो इंतज़ार कर रहे हैं रैंकिंग से। लेकिन चलें पहले चलते हैं मैच रैंकिंग्स की तरफ, जहाँ पर आज के दिन के इस आखिरी मैच के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रू इज़ दैट टीम जिसने चिकन निकाला है और 27 पॉइंट्स निकाले हैं। 27 पॉइंट्स वाला कमबैक बहुत ऊपर लेकर जाएगा इनको, बहुत ऊपर लेकर जाएगा लादेन। 15 रैंक पॉइंट्स हैं, 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, 12 क्या 10 भी किल पॉइंट्स कोई टीम इस मैच में स्कोर नहीं कर पाई। यस अगर यही इसी तरह का मैच ब्रू कल निकालती है ना, एक और मैच, पहला मैच, देन दे कैन बी इन टॉप 5, टॉप 3 भी आ सकते हैं उसके बाद, अच्छे मैचेस निकालने के बाद। लेकिन सोचे 15-16 स्पॉट से एक टीम उठ के यहाँ तक आ रही है। लेकिन चले, गॉड लेग सॉल्वर्ट के पास 19 पॉइंट्स रहेंगे, एक अच्छा मैच उनकी तरफ से भी निकाला गया। इनको के पास 15 पॉइंट्स रहेंगे, फॉर एग्रीमेंट के पास 14 पॉइंट्स रहेंगे, T2 के 12 पॉइंट्स। T2 की भी आज कंसिस्टेंट खेले, लेकिन DRS ने क्या किया है? चिकन निकालने के बाद DRS ने एक भी मैच अच्छा नहीं निकाला अभी। लेकिन इतनी मुश्किलात में भी वो फंसे नहीं है, पहले पेज पर ही हैं। सो कल के दिन उनको भी जान मारनी पड़ेगी पहले पायदान के लिए। तो वेयर इज DRS? ओके, DRS ऑन द 4th स्पॉट, सो 102 पॉइंट्स हैं उनके पास। सो इनको भी, और जैसे हम ब्रू की बात कर रहे थे, सबको ही ऑब्वियसली जो पहले पायदान को या टॉप 3 को एम कर रही हैं। खासतौर पर DRS की मैं बात करूंगा, आने वाले जो आगाज के मैचेस हैं प्रेशर खत्म करने के लिए उनको वो अच्छे निकालने हैं। दे आर ऑन द 8th स्पॉट, 3rd पर थे आज के दिन वो। यस, आज एक भी अच्छा मैच वो नहीं निकाल पाए अपने लिए अलादीन। चोक किया गया आज के दिन उनकी तरफ से, लेकिन आई बिलीव कल का दिन इनका बेहतर जाएगा, इनका वाकई बेहतर जाएगा। नोवा का बेहतर जाएगा और इन्फ्लुएंस का बेहतर जाएगा। DRS को मैं यही कहूँगा कि पहले जो 3 मैचेस हैं, 3 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, पहले 2 मैचेस को कैश आउट करना बहुत ज़रूरी है अलादीन इन टीम्स के लिए। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कल के दिन इन्फ्लुएंस केविन के पास 51 पॉइंट्स थे और आज उन्होंने सिर्फ 54 पॉइंट्स थे, आज उन्होंने 37 पॉइंट्स निकाले हैं बस। सो बुरा दिन तो इनका रहा है, लेकिन आई सी 90 पॉइंट्स गॉड लाइक सॉल्वर्ट
88 points. Burina United Sports 86 points, not bad. 85 points Wolves Esports के पास मौजूद है. Geek Fam 76. Team Firefox Esports Influence 69. came in on 8th spot, has 91 points और बरीराम 86 points पे आ चुकी है. बिल्कुल सही, बिल्कुल. लेकिन चलें, आप देखें कि IHC के पास 90 पॉइंट्स मौजूद हैं और अगर आप फर्स्ट पेज पर जाते हैं तो 96 पे नोवा है एंड दे आर ऑन द 5th स्पॉट. उफ, 6 पॉइंट्स का फर्क है. इवन BRU से 10 पॉइंट्स का फर्क है. BRU के पास 86 पॉइंट्स हैं, नोवा 5th पे है, नोवा के पास 96 पॉइंट्स हैं. 10 पॉइंट्स में आप 11वें पायदान से 6ठे पे जा रहे हैं, 5वें पे जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन कल के पहले मैच में अगर ये लीड कैप्चर कर लेते हैं तो कल ये टॉप 3 के लिए खेल रहे होंगे. बिल्कुल जी, टॉप 3 के लिए खेल रही होंगी ये टीम्स. और सिर्फ ब्रू ही नहीं बल्कि ब्रू के अलावा आप देखें कि DRS भी आ सकती है. सॉरी, IHC भी आ सकती है, DRS नहीं, IHC भी आ सकती है. DRS ऑलरेडी 4th पे है. IHC भी आ सकती है, ST भी आ सकती है. चीज़ें बहुत बहुत गंभीर होती जा रही है. लेकिन खुद दिनों साथ आज के दिन का अख्ताम आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह कल. अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दो में रखिए. और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारी कास्टिंग पसंद आ रही है, किसी भी तरह का क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ पर आकर द ग्रेट अलादीन _ पर आकर मुझे और आदि को adi.asl पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं. लेकिन तब तक के लिए कल तक के लिए दीजिए इजाज़त. अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दो में रखिए याद. अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.
भाई आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। Get ready. भाई वीडियो काफी अच्छी हैं, आप काफी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह आपको कामयाब करे।
भाई अगर मैं अभी रूम पता करूँ ना तो अभी आप मेरे साथ रूम कर सकते हो। ब्रो आपकी आवाज नहीं आ रही, मैसेज में लिख दो। ठंडी ये ये गेमिंग ये अच्छा ये गेमिंग वाइटी ओके यार लाइक ओके ओके अच्छा भाई मैं बनवा ये रिक्वेस्ट सेट गेमिंग करो भाई रूम बना रहा है मेरा और आपका भाई सब कर रहे हैं लाइफ ये गेमिंग रूम बनाएगा। हाँ ये फ्रेंड का रिक्वेस्ट भेज नाम भी दिया। है और ये अच्छा अच्छा चल
Welcome to PUBG Mobile. Team match, let's go.
Red team victory. यार क्या थे भाई बात सुनो ना उसको बुलाओ ना आप
Okay. मेरा किधर अच्छा अकाउंट है यार।
Start the match. Start the match. Have fun. I need to go. And land together.
ये देखिए लाइव आ रहा है। चलो ओ तू भी जीरो गोली को देखो कैसे चमचे बने हुए हैं गोली XP Joker, please off the speaker. अच्छा oh pipi papi 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 dum dum. क्यों किक कर दिया ब्रो? मेरी रिक्वेस्ट तो उठा लो ये भाई मेरी रिक्वेस्ट तो उठा लो बंद कर दी
बोलना तो सही यार। Okay. No.
वन प्लीज यार प्रिंस भाई। केपी के हेलो रोल फातिमा। भाई। भाईजान केपी के भाई माइक बंद कर दो या फिर कुछ बोलो। जी भाई जी। ओपी अफरीदी भाई, ओपी अफरीदी भाई, तो थोड़ा आपसे काम है। ओपी अफरीदी भाई, माइक ऑन करना है, काम है। केपी के भाई हेलो, माइक तो ओपन करो यार, अभी आपने बोला और बंद कर दिया। ब्रो यार एक अफरीदी चैनल भाई, सब्सक्राइब कराना है, टीए गेमिंग वाईटी यार, कर दोगे प्लीज यार, बहुत मेहरबानी होगी। भाई ये है चैनल का नाम। हाँ भाई जाके ब्रो करो। अभी कर दो, लाइव अफरीदी भाई चल आ रहा है, गई। लाइव स्ट्रीम चल रही है, आए भी करके आ जाओ, कर अफरीदी भी भाई, दो, अफरीदी भाई मेहरबानी लाइव होगी। स्ट्रीम चल रही है, सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने कर दी ब्रो, मैंने कर दिया, आपको आपको कर दी। ब्रो देख के आओ ना। टीए गेमिंग वाईटी यार, ये जो मिथिक फैशन वाले का नाम लगा हुआ है यही है, गेमिंग वाईटी। ब्रो कर दोगे बताना। हो गया, गेमिंग हो गया, राणा केपी के बोल रहे मैंने कर दिया, हो गया। Jackson sampai dapat. ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
रॉकी भाई हेलो। रॉकी भाई बोल नहीं सकते, मैसेज पे तो जवाब दे सकते हो यार। क्या क्या? क्यों नहीं बोल सकते यार? रॉकी भाई मैंने समझा आप नहीं बोलते हो, शायद मैसेज पे जवाब देते हो। नहीं नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या रे भाई लोग, ठीक हो? और सुनाओ। वालेकुम सलाम, ठीक। मेरे भाई एक छोटा सा काम है, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मुझे बोल रहे हो, नहीं किसी और को? आप कोई और कौन है लॉबी में? अच्छा, क्या बोल रहे हो? और फरमाइए। मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा चैनल सब्सक्राइब कराना है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ओए चैनल? यार इसकी तो मैं बहुत रेडी होता हूँ, चैनल वगैरह या टिकटॉक अकाउंट के लिए बहुत तेज तो रेडी होता हूँ। बोल बोल, कौन सा चैनल है? ये इसने मैसेज पे बताया आपको नाम, ये लिखो लाइव स्ट्रीम चल रही है। हाँ अच्छा, यही बता रहे टिकटॉक अकाउंट है? टिकटॉक अकाउंट तो नहीं, टिकटॉक अकाउंट है, गेमिंग अकाउंट है तला। देखते हैं आप प्रो यार, करवा दो, कर दो, बल्कि करवा हाँ, क्या दो, कर दो आप। मेरा नाम रॉकी, ये दोबारा सामने आएगा, आपको झटका भी लग जाएगा इसके साथ। ये बात याद करके मतलब फिर आपको खुद याद आ जाएगा ना, मैं हो कौन। हाँ रॉकी, रॉकी वो फिल्म मैंने देखी है, आ, KGF 2 भी फुल देखी है, वो मसला नहीं है। नहीं, उससे पहले पहले, कल रात से पहले पहले आपको मेरे बारे में पता चल गया मैं है कौन। अच्छा ब्रो, अभी फिल्मी डायलॉग खत्म हो गए यार, कर दे यार प्लीज यार। सच में? अच्छा अच्छा, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। ये आपको कल रात से पहले पता चलेगा, कल आपको पता चलेगा मैं है कौन। सही है सर। दीदी भाई यार माइक खोल दो ब्रो प्लीज यार, एक छोटा सा काम है यार। केक कर यार, केक कर। या खुदाया, जो माइक नहीं खोलते इसके बम फाड़ कच्छों में। अभी सुबह जी। इसकी तो जान मेरी फेवरेट है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा वो इन लोगों ने अपडेट कैसा दिया, ये तो बता पहले मुझे।
Oh, लाजमी। यूजे भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। या मुझे आवाज नहीं आ रही इसकी, या उसने माइक खोला हुआ। बेनिफिशियरी ऑफलाइन हो गया। तो सारे चूजे हमको टकरे। मिस्टर भाई हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। तो आओ जी भाईजान। हाँ दिख के संडे को।
या यहीं में गेट भी एक लॉबी करो भाई जाना